are swimming. यो तो गाइस कैसे हो आप सभी। आज आज हम बहुत कुछ करेंगे। आज हम सियाओ को मरवाएंगे। आज हम स्टोरी क्वेस्ट करेंगे। ठीक है, स्टोरी क्वेस्ट करेंगे। उससे पहले मेरे पे कुछ ज्यादा ही रीजन है। तो जो मेरे पे रीजन है वो रीजन मेरे को एक्चुअली निंगवांग को लेवल अप करने के लिए यूज करना है। बिकॉज मेरे सिर्फ जियाओ और चीची अच्छे कैरेक्टर है, बाकी सब टट्टी है। तो निंगवांग को लेवल अप करना है मुझे। उसके लिए मेरे को ये चीज़ चाहिए, जिसके लिए मेरे को जियो हाइपोथेसिस मारना है, जिसके लिए मैं अभी मेरे एक दोस्त को बुलाऊंगा। वाओ, आई एम सो I जीनियस। also want your hypothesis, कम so ऑन never माय mind. सर्वर, जल्दी से, What? जल्दी आ। I can't play right now. फोन से। I still can't play because there's somebody. हो Somebody important? हो Who Tao? हो Who Tao? अबे जल्दी आना। या जो भी है उसको दे दे, उसके साथ कर लूंगा मैं जियो हाइपोथेसिस। मेरे पे रेजिन नहीं है। अबे तो आना भाई, हेल्प कर भाई। अभी क्या रैंडम बंदे को जाकर बोलूंगा कि मेरे को हेल्प करना भाई। मेरे पे एक हेल्पर है 56 डीलूक कैचिंग जाओ सब है। बुला बुला बुला। उसका नाम भूल गया अभी, मेरे को खोल के देखना पड़ेगा। What does strength mean to a ninja? What does it mean to be the strongest? मेरे को अकेला करना पड़ेगा इसका मतलब। वाओ, लेट्स गो पॉगर्स। कर लूंगा अकेले। किधर है नोएल मेरा? नोएल नोएल नोएल। Oh, how exciting! Oh, how exciting! बस चले। मेरे को पहले तो ये चाहिए, और अब ये चाहिए, और अब मेरे को ये भी चाहिए। ये भी चाहिए। ओके, अब मैं जाके जियो हाइपोथेसिस को मार सकता हूँ। Rain outlines your fate. Thank you, Hillichers, for your love and support. Bye bye. Have fun. Time to act. Body and mind. I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift. I'll bring my seasoning. लगा लगा जल्दी लगा। Let's go.
अबे भाई Guys. Leave it all to me. Yeah. मार भाई तू sabotage कर अपने आप को। Yeah. वाह। Someone needs assistance. Huh, I'll catch up. Now he will be dead in 2 seconds, I guess. Yeah. 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 Sacred name, fortune preserve. Rain outlines your fate. Let me evil conquering. Useless. किधर जाएगा ये? किधर जाएगा? आ रहा हूँ मैं। आ रहा हूँ मैं। Useless. तो साले बात नहीं कर रहा होगा मतलब फ्री कर दे। अच्छा रुक रुक। I'll catch up. आजा आजा Someone needs आजा assistance. आजा आजा। Wheel of life. अच्छी है, क्या करेगा? मैं सबको हील कर दूंगा। यही तो मैं भाई चाहता दो था। वे तू लाइक जहाँ पे वो हाइपोथेसिस है हाँ उसके ऊपर किसी करके भी कुछ ब्रेक डैमेज मार सकते हैं। हमें तो नहीं जाना है ना उसके ऊपर। Leave it all to me. ज़्यादा डैमेज खाते हैं। Yeah. इट्स अ टिप क्योंकि मैंने किया है मेरा कैचिंग से। मेरा जियाओ बहुत डैमेज करता है। Go. Hi. ये तो जियाओ का डैमेज बहुत होता है। ऊपर से मेरे पे ड्रैगन स्पाइन वाला है ना, ये और होती है। I'll bring my seasoning. आ जाओ। As a dutiful maid would. As a beautiful maid would. Yeah. अब ये थोड़ी रीसेट मिशन होने का पहले वेट खत्म कर। अरे मेरे पे रीजन पड़ा है एक्स्ट्रा, तो पूरा रिफिल हो जाएगा ना स्टोरी मिशन करते करते। देख कितने सारे स्टोरी मिशन है, ये करते करते सारा रीजन भर जाएगा। भाई बुक्स मिलेगा बुक्स। मेरे को अपने ये निगाह के निंगवांग को लेवल अप करना है। ये देख इसको असेंड करने के लिए हाँ मेरे को मेरा निंगवांग को लेवल 60 से ऊपर करना है। और तो मुझे भी करना है, उसके लिए मेरे को I want something just like this, man never dies. अगर निंगवांग लाइक लेवल 60 के ऊपर हो जाएगा देन मेरा 2 टीम में लाइक सब लेवल 70 इजी। तेरा कोई लेवल 80 भी तो होगा। हाँ है कैचिंग है। Why do you have caching? शी इज एक्चुअली गुड। व्हाट डू यू मीन व्हाई डू आई हैव कैचिंग? तूने ऐसे ही स्पिन कर दिया था, तूने इंटेंशन भी नहीं था तेरे कैचिंग के, तेरे को मिल गया फालतू में। रिद्धि को चाहिए था उसे बट नहीं खराब मिला। नहीं है।
खराब नहीं है कैचिंग। उतना अच्छा नहीं है। मैं वीडियो देख रहा था कल, उसने कहा था उससे खेलने में मेरे को मजा आ रहा था कुछ दिन, उसके बाद उससे कुछ नहीं कर सकते ऐसा एक बंदा बोल रहा था। हाँ बट फर्क नहीं पड़ता वो देखो खेलना है तो और खेल ले। देख देख, कैचिंग के लिए आर्टिफैक्ट बहुत अरे ही नहीं नहीं ज्यादा नहीं ही नहीं हार्ड है। नहीं, सुन सुन। और एक चीज नहीं, मैं कैचिंग टेक्टोन का का और एक वीडियो चीज है देख कि रहा था, उसने बोला टट्टी है। नहीं, टट्टी क्यों है पता है? क्योंकि लाइक तेरा लाइक कैचिंग का नॉर्मल अटैक्स ना बहुत ज्यादा पुशबैक करता है, तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा को तो डैमेज नहीं मारना चाहिए ना, एक साथ बहुत जन को मारना है। तो कैचिंग के साथ लाइक कैचिंग थोड़ा खराब है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुशबैक कर देता है। एंड उसलिए तो लाइक सुक्रोज को रखा है ना कि वो क्राउड कंट्रोल करेगा। सुक्रोज क्राउड कंट्रोल, जिंक्यू का वो पानी का वो मैंने बर्स्ट भी लेवल अप करके रखा है। उसके बाद कैचिंग का कंडक्ट हो Worthless. गया। एंड लाइक बेनेट के अल्टी के अंदर तो वेपोराइज एंड कंडक्ट एक साथ होगा। प्लस आई फॉरगॉट टू से जिंक्यू का मेरे कॉन्स्टलेशन में मिल गया, सो दैट्स गुड। वो तो मेरे पे भी है बट हाँ मैं बोलना भूल गया था कि आई डोंट लाइक कैचिंग बिकॉज शी इज इलेक्ट्रो। एंड सबसे बड़ी बात भाई, उसको स्वॉर्ड क्यों दिया है? उसको एक बो दे देते तो अच्छा रहता। और खराब कहाँ सब है? लोग सब लोग मैं यूट्यूब में देख रहा था, सब लोग बोल रहे थे क्यों स्वॉर्ड है कैचिंग पे, क्यों स्वॉर्ड है, सब लोग बोल रहे थे। कैचिंग के लिए लाइक अच्छा टीम चाहिए, सोलो कैचिंग नहीं कर सकते। यूट्यूबर लोग क्या करते हैं कि हाँ बहुत इसीलिए तो सोलो। यूट्यूबर टट्टी बोलते हैं। कॉल देख, अगर डीपीएस कैरेक्टर तेरे को चाहिए जो स्वॉर्ड कैरेक्टर होता है, वो हमेशा सोलो कैरेक्टर ही होना चाहिए। जैसे डीलक भी सोलो कैरेक्टर है, जियाओ सोलो कैरेक्टर है, वैसे अगर तेरे को डीपीएस हाँ चाहिए तो वो बट सोलो होना स्टिल चाहिए। लाइक देख देख, वो तो उन लोगों का लाइक एक टेस्ट है। बट वो छोड़ के तो हम लोग तो कभी सोलो नहीं खेलेंगे ना। क्या मतलब? हम लोग जब फ्लोर क्लियर करेंगे हम लोग सोलो नहीं खेलेंगे। तू पागल है, तू सोलो करेगा? अबे पागल, देख तू समझ पहले, कैशिंग को टीम सपोर्ट चाहिए मारने के लिए, और जो लोग नॉर्मली मार सकते हैं उनको टीम सपोर्ट के साथ और ज़्यादा डैमेज बढ़ जाता है। इसीलिए कैशिंग वर्स्ट डीपीएस में से है, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों डीपीएस बनाया है, लोग Useless. बोल रहे थे। कॉस्ट्यूम पे अगर वो है कैशिंग की जगह रेजर है, वो कैशिंग से बहुत ज़्यादा डैमेज करता है जबकि वो 4 स्टार है। बट एक चीज है रेजर का, Rise. लाइक उसका तो वो पूरा फिजिकल डैमेज, इवन कैचिंग को भी फिजिकल डैमेज कर सकता हो। बट कैचिंग का एक ऑप्शन है ना, यू कैन डू फिजिकल प्लस इलेक्ट्रो, तो दोनों ही अगर हो गया तो खराब कहाँ है? जो रेजर का क्या है कि पूरा फिजिकल है। इसीलिए तो रेजर बेस्ट कैरेक्टर में से ऊपर आता है। मैं वीडियो देख रहा था, टीयर लिस्ट में कैशिंग को बहुत बू बोला था ट्रैक्टर ने। बट रेजर जितना भी फिजिकल हो, प्रॉब्लम क्या होता है? नो रिएक्शन, नहीं, उसके कुछ नहीं अल्ट कर में सकते। बहुत रिएक्शन होता है, पूरा इलेक्ट्रो। एंड नो। ट्रैक्टर ने स्ट्रेट बोला था ना कि इलेक्ट्रो उतना पावरफुल नहीं है, उसके रिएक्शन से उतना फर्क नहीं पड़ता। Wheel of life. उसने कहा था कि मैं वेपोराइज, मेल्ट, फ्रीज, मैं टेक्टोन को कैसे देखता हूँ पता है? फैट सब। मैन हु टॉक्स टू मच बिकॉज ही गॉट मनी। क्या कहते हैं, देख Someone needs उसमें क्या सीन है assistance. ना, तेरा सुपर कंडक्ट वगैरह सब Someone needs बहुत ही ज़्यादा assistance. ओपी डैमेज करता है। आई मीन सुपर Rise. कंडक्ट बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, सुपर चार्ज। आई मीन पता नहीं उसका, मैं नाम भूल गया। जो इलेक्ट्रो बोल रहा हूँ, फायर एंड उसके साथ होता है। हाँ, फायर एंड इलेक्ट्रो ओवर पावर्ड। नहीं नहीं, फायर एंड इलेक्ट्रो नहीं, फायर एंड हाँ फायर एंड इलेक्ट्रो ही शायद, पता नहीं किससे होता है बट किसी एक से सुपर कंडक्ट होता है।
आई मीन सुपर कंडक्ट बोल रहा हूँ, सुपर चार्ज ऐसा कुछ होता है, पता नहीं, मैं भूल गया नाम। देख वो बोल रहा था कि सब कुछ अच्छा है, इलेक्ट्रो चार्ज बहुत टट्टी है, वेपोराइज तो बहुत ओपी है उसने कहा था। और जो डेंड्रो कैरेक्टर आ रहा है ना, उससे तो बर्निंग इफेक्ट डाल सकता है जिससे ओवर टाइम डैमेज होगा। Wheel of life. Boring. Evil conquering. सुपर कंडक्ट आइस एंड इलेक्ट्रिक में होता है। Time to clean up. सुपर कंडक्ट, हाँ जो भी होता है वो बहुत अच्छा है। I know that. I also got Chongyun, you know. ओ ये वाला बच गया था 1 HP से, शिट मैंने देखा ही नहीं था। कोई बात नहीं, सेकंड में टोक दूंगा। Someone else will clean up. I don't take out the trash. I'll catch up. हाँ, और 2 बार करना पड़ेगा मेरे को ये। 2 बार के लिए अभी मेरे पे पैसा नहीं है तो बाद में करूँगा। अभी स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ मैं। किससे शुरू करूँ मैं? इससे पहले वाले से, लेट्स गो। नहीं, जिसमें रिवॉर्ड अच्छा है उससे शुरू करूँगा। किसी पे प्राइमोजेंस नहीं है, पहले वाले से शुरू करो। Someone else will clean up. I don't take out the trash. I'm watching your stream right now. Okay, bye bye. See you. Have a great time. Be on your guard, traveler. Now is no time for sightseeing. Oh, why's that? Has something happened? Yes. As unusual as this may sound, numerous eyewitness reports have confirmed an active Ruin Guard presence in this area, even though this is far beyond their normal area of activity. Sergeant sent someone to find out just where these ancient machines might have come from. It appears... So did somebody wake them up? As I say, the reason is still unclear. We have very little intelligence at present. Moreover, the ruin in question is of the especially spooky variety. Strange noises are often heard coming from within. As such, we are not permitted to investigate until the order comes through from headquarters. In any case, the only sensible strategy in the meantime is to increase Millilith patrols. We must not let innocent civilians come to harm.
That's a good point. Ruin guards are probably pretty dangerous for regular folk. Wow. I'm very grateful indeed for the offer, but it just wouldn't be worth the risk. Oh, don't worry about that. This one beats up ruin guards for breakfast. The self-confidence of young people is an extraordinary thing. Well, if you're genuinely offering, I did see some ruin guard footprints on the hillside, but since then I've been too busy warning passers-by to investigate myself. Footprints, eh? Interesting. We'll take the case. While the Millilith stands guard, evil shall never prevail. On behalf of the Millilith, I salute you, traveler. You have my gratitude. I will rendezvous with you once I have finished my patrol. कितने रुइन गार्ड ठोकने 100-200 ठोक दूंगा। अरे सब छोटे मोटे काम क्यों देते हो मेरे को? This footprint is huge. It has to be the one that guy was talking about. पीछा Here's करो another ये one. टट्टी फुटप्रिंट्स का। Seems the ruin guards did come out for a walk मेरे after से all. अरे ये वाला Ruin guard रुई। footprints leads us here. ऐ निकल To... जल्दी पैदा हो। A ruin guard over there. Useless. खत्म इसका जिंदगी खत्म। Rain तो मेरा outlines निंगुआंग your किधर गया? ये क्यों है इक्विप? मेरा निंगुआंग किधर गया? मैं सिर्फ दिया उसको फाइट कर रहा हूँ। मेरे को निंगुआंग किधर? आओ भाई किकी से कितना कम डैमेज होता है? वेपन अपग्रेड करना पड़ेगा किकी का। किकी का फिजिकल डैमेज बहुत कम है। As a good night should. collateral damage. ले टट्टी ले। I am a disgrace to the knights. Guys never blind. Life goes on. पहले तो 2 सेकंड में हो जाएगा। No, my sword! Useless. हो गया भाई, हो गया तेरा। ले ले और खा के। तो मेले से ही मरेगा। तूने उसको मारा था ना? Talk to Paimon. Well, that's one down. Let's keep looking around. Maybe we'll find some more.
और मारने भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वो नीचे एक दिख गया मेरे को ऑलरेडी घूमता हुआ। ये रहा एक और। ये कौन है? टीवी? Hey you! Check this out! Isn't it awesome? What is he wearing? I've never seen one this close before. Have you ever seen one? You bet! Mr. Cyclopses are crazy strong. No bad guys can escape from these guys, that's for sure. Mr. Cyclops? Aw, that's cute! Wait, what? Do people seriously call them that? Yep, my brother said so. And he's the best toy seller in the whole world. It's his job to sell this kind of stuff. Right now, he's at the Institute for Toy Research in Liyue. That's where Mr. Cyclops has come from. It's always nice to meet someone else who likes toys. So tell me, where'd you get your toy from? Must be a pretty new kind, huh? I've never seen one that can fly and talk before. Hey! Just 'cause you get to play with Paimon all the time does not mean that Paimon's a toy! Greetings! Have you found anything? Oh. A child? What's the situation here? We just, found him. Uh-uh. You shouldn't be out here, boy. There are killing machines in the area. It's extremely dangerous. Killing machines? You mean ones that look like this? Precisely. And including this one. It's not moving now, but if it were to wake up, the consequences would be... You take that back! Mr. Cyclops is not a killing machine. He's one of the good guys. Mr. Cyclops? We shouldn't be talking to this guy. If he's saying mean things about Mr. Cyclops, he's definitely a bad man. I'm just trying to help. I've always been hopeless at dealing with children. Well then, why don't you get back to your normal job and leave us to do the babysitting? It seems I have no other choice. Very well. I will continue with my patrol. Please escort the child to somewhere safe. It's much too dangerous here. The mighty Mr. Cyclops scared off the bad guys once again! My name's Tusser. I came all the way from Snezhnaya to look for my brother in Liyue. But I'm all on my own, and I don't know where to find him. You came all the way from Snezhnaya? Oh, I think this is the part where I give you this. Here you go. What is it? Looks heavy. What the? My brother said I should take it with me. He said, find a nice person to give this to, and they will take good care of Tusser. Your brother makes a good point. Still, it's hard to believe you made it all this way armed with nothing but a few bags of Mora. Your family must be super rich. Paimon never knew you could make so much Mora from selling toys. Yay! Thanks, nice lady. All right, now we gotta make a pinky promise. You make a pinky promise, you keep it all your life. You break a pinky promise, I throw you on the ice. The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off so you never lie again. Wow, that one nursery rhyme kinda says all you need to know about Snezhnayan culture. Well, if we weren't your babysitters before, we sure as heck are now. But where should we look for your brother? Snezhnaya? Oh, how about the Northland Bank? Oh, right! Finally, now I get to see my brother! Damn, that's a lot of damage. इसका भाई कौन है? वुड क्वेस्ट। वो देखने दे स्टोरी क्वेस्ट में किसका किसका लिया है मैंने।
Zhongli, Tartaglia, Tangyu, Albedo, Tutao। Tartaglia इसका भाई हो सकता है, बिकॉज उसी पे इतना पैसा होता है। चाइल्ड Jewelry's out of stock. Feel free to take a look around. New stock in new antiques. Rex Lapis as a shield. आओ, मैं तो मेहनत से ऊपर जाके गिर गया। ओह माय गॉड, वाओ। कौन है तू? ओके ओके, टॉप लिस्टमेंट। Finally, a seat with a view. डीप फ्राई। जाते हैं हम चाइल्ड से मिलने, मेरे को लग रहा है ये चाइल्ड ही है। That seems a little inappropriate, don't you think, sir? How can you... Relax. Once in a while can't hurt. It'll be fine. Huh? What is he doing here? Yay, my brother! I found you! I know that voice. Why, if it isn't my little brother Tooser! My goodness! What a nice surprise, Tooser. I thought I would have to wait till I return home before seeing you again. How are the others? Sister Tonia and Brother Anthon? Is everybody keeping well? They miss you a lot. Tonya prays for you every day at dinner. Wait a second. What are you doing here in Liyue, Tooser? How have I not heard anything about this? Well, what happened was, I saw a boat that looked like it was selling toys, so obviously I thought you were on board. And then, when I got off, I just kept walking and walking, and then I found a Mr. Cyclops. Mr. Cyclops scared off a bad guy, and then I found this nice lady to help me come look for you. Cool. Suddenly Paimon doesn't feel so bad about taking Tooser's money. Tooser, what you did was extremely dangerous. I'm so happy to see you, really I am, but please, promise me you won't do anything like this ever again. Okay, I promise. Please don't be mad at me. I'm not mad at you. I just care about your safety, that's all. If you hadn't met these nice people, things could have been a lot more dangerous for you, Tooser. I hope you said a big thank you to them. Yep, I always remember my pleases and thank yous. Oh, so you did notice we were here. You were just ignoring us. Gotcha. Forgive me, it's always family first where I'm from. Don't take it personally. I know we've had our differences up to now, but a few minor quibbles aside, we get on quite well, don't you think? Come on, you know I'm just a pawn and all that, just doing my part. As for who wins, who loses, and how each side deals with the consequences, I prefer to leave all that up to the ones playing the game. I'm much more interested in who wins and who loses when it comes to our little sparring matches. Sounds like you're ready to get your butt kicked again. Ha! You're forgetting something about me. I, Tartaglia, spend every second getting stronger. Don't expect to have it quite so easy next time. Whoa, 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 whoa! You aren't gonna fight now, are you? Maybe not right now. Not while my kid brother is watching. Why do you want to fight the nice lady? Are you guys enemies? No, not at all.
allow me to formally express my sincerest gratitude for taking care of my darling brother. His safety matters very much to me. So anyway, Paimon has a question. Tooser said something about you being a toy seller. What's that all about? Aren't you supposed to be one of the Fatui's harbinger? Ahem, yes, about that. Shh, look. I only told him that so that he'll look up to me. In the eyes of a child, working with toys must be the best job imaginable, right? I don't want my family to have anything to do with the Fatui's, or should I say Snezhnaya's, darker side. The older ones already know that I serve the Tsaritsa. But Tooser is still so young, and in his eyes... As I was saying, I remain Snezhnaya's greatest expatriate toy seller, currently attached to the Liyue branch of our Institute for Toy Research. That's right. My brother's the greatest. He's Mr. Cyclops' bestest friend. Just humor me in front of Tooser, if you would be so kind. Ah, yes, Ekaterina. I will deal with the issue of that outstanding payment right away. Hey, slinking off, are we? But Master Child, would it not be a little improper to ask you to deal with debt collection? A bet is a bet, isn't it? And if you lose a bet with an agent, well, you might as well get a little exercise out of it. Are you going off to sell toys now? That's right. As much as I'd love to catch up a little longer, Tooser, duty calls. I'm sure Miss Nice Lady here will be happy to keep you company while I'm out, though. So we still need to keep babysitting for you? Sure! I really like this lady. And anyway, she made a pinky promise to take good care of me. Ah, well, it sounds like Tooser really likes you, and that you've already made a pinky promise to take good care of him anyway. Then I'm in your debt. Here, take this as Tooser's entertainment fund. I want him to have a good time while he's in Liyue, so take him anywhere he wants. If need be, you may find me by the river near Qingshu Pool. I'll see you both around. Welcome. Looks like we'll be hanging out with Child's kid brother for a while. So, where are we going to play first? How about we start with the toy store? चलो टॉय स्टोर में Try your luck betting on Jade? Huh? What are those super colorful winged things? They're called kites. The kids in Liyue love them. Hello there, dear. You look like you've come a very long way. Let Granny guess. From what you're wearing, I would say... Snezhnaya. That's right. How do you play with these kite things, Granny? When the wind picks up, you let out the string and whoosh! The kite will fly into the air, up, up, and away. Wow, that's amazing. Do you have any Mr. Cyclops ones? Mr. Cyclops, I'm sorry, I want to fly Mr. Cyclops high into the sky so all the kids can get to know him. Well, I can do custom builds, but I'll need some amount of reference material. Will this picture do? I drew it myself. I bring it with me everywhere. I'll manage. Still, I must warn you that custom builds can really be quite expensive. We should be fine. Child was pretty generous with that entertainment fund. But then again, throwing money around willy-nilly is, kinda irresponsible. Well, so, yeah,
thinking these funds are earmarked for Tooster's entertainment. But if there's any left over when we're done... Either way, it's time to talk prices. Fine, fine. I've neither the time nor energy to bargain with you at my age. I suppose this price will do. Thanks, Granny. Worry not. Just leave it to me. For our next stop, why don't we head to One Min Restaurant? It would be a mighty crying shame to come all the way to Liyue and never try the food. Honey, just call me Ned. I just like to make people smile. I want a new toy. Quan, I want a new toy. Honey, I can't believe the well got polluted. I just like to make people smile. Ha! Adventurer! Think you can last a round against me? Quan, I want a new toy. Honey, just call Okay, I'm back. I just like to make people क्या करना है? अच्छे smile. से खाना खिलाने लेके आना है रेस्टोरेंट पे. Alright. Alright. Oh, ये तो मैं खुद भी बना सकता हूँ. मैं फालतू में पैसे क्यों waste Hello, करता हूँ? welcome. Table for 3? This restaurant has a really choking smell. A choking smell? Oh, you must be referring to our signature spicy chili scent. Spicy chili? But I can't eat spicy food. Oh, what a pity. A person who can't eat spicy food misses out on half of life's joys. Is it really that bad? My meals have to have lots and lots of sugar, and the oil has to be extra virgin vegetable oil. Wow, we've got a real rich kid on our hands. Looks like Wanmin Restaurant's dishes aren't to Tooser's taste. Maybe we should go somewhere else. Will that be all? Any more special requests? What do you mean, Chef Now? Giving the people what they want is the very reason Wan Min Restaurant exists. If I thought for 1 second that I couldn't make a dish to satisfy this child's tastes, I would have absolutely no business calling myself a chef ever again. Whoa, there seems to be a lot of professional pride riding on this. Then we'll leave it to you, Chef Now. We'll be eating here after all. Sure. But let me say this first. Special requests are going to cost you more than normal. Of course, we aren't going to demand prices anywhere near as exorbitant as the likes of Lily Pavilion or Sunya Kiosk. Is it just Paimon, or are premium custom orders in fashion lately? Still, surely there must be a little room for negotiation, right? That seems a bit on the low side. You do realize these dishes will be prepared specially to your requirements, don't you? Ah, you folks. Let's go with this then. Any more haggling and we'll ruin the other customers' appetites. Thanks, Chef Now. Please sit wherever you like. Your food will be here shortly. Ugh. It was
little sick. I thought it was just right. Almost exactly like how my sister Tonya makes it. But this doesn't feel right somehow. Didn't we bring Tusser here to try Liyue's specialties? Whatever. So where do you want to go next, Tusser? I was so caught up looking for my brother when I first got here that I didn't get a good look around. Good idea! The hustle and bustle at the wharf is a specialty of Liyue Harbor, too. Woo-hoo! Wow, this place is huge! And there's so many people! Are the waves here always like this? Don't they ever freeze? Given Liyue's climate, the area around the harbor's mouth probably never gets cold enough to freeze. Paimon is kind of the traveler's exclusive personal tour guide, but since this is a special occasion, Paimon can make an exception to help Tusser get to know the place. This place is Liyue's commercial hub, and it's been the biggest port in the Seven Nations ever since it was decided that Liyue would take on the world through trade. Other than merchant vessels, many fishing boats and industrial transports dock here to replenish their fishery supplies and daily necessities, which, thanks to the immense throughput capacity of the wharf, yeah, Paimon can't remember how the rest goes anyway. Well, guess Paimon will just have to explain this Paimon style. So this harbor is like Tevat's mouth, and it's the biggest mouth you've ever seen. All the nations float their boats over the sea into the mouth. The harbor goes nom 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 and has a taste of each boat and the cargo it has on board. Then, Liyue Harbor rubs its big round belly in satisfaction because it's all stuffed full of delicious mora. Hey, what's that big metal hook over there? I want to see. Wait, Tusser, don't run off. After all that, he wasn't even listening. No fighting instinct. 5 times speedy equals... That metal hook is huge, and it gets bigger the closer we get. This is an anchor. Docked ships use it to hold themselves in position to stop the wind and waves from blowing them away. An anchor. Got it. But I think I might get it mixed up with Commodore Hook. Commodore Hook? Is this another one of your weird toy names? My brother always sends me a really big toy for my birthday. Commodore Hook, Black Steel Jack, Iron Tony. We keep them all in our backyard. Yeah, and that's why I can't bring them with me all the time. It's a shame. Wow! Using Fatui funds for personal gain? To think Snezhnaya would let their harbingers do that, all for some giant toys. But suddenly, it doesn't seem so strange that Tusser would treat a ruin guard as a giant toy. But my favorite has to be Mr. Cyclops. Even though I mostly came here to see my brother, the other big thing I wanted to do was play with Mr. Cyclops. Oh, are they selling fish over there? Let's have a look. Hey! Quit running off! Is this where they sell fish? Wow, the fish here in Liyue are so small. Hey, whose fish are you calling small? Little kids shouldn't go around ruining others' business. He's just a curious kid. No need to get worked up. That said, these fish are actually pretty big by Paimon standards. Just how big are the ones you're used to, Tusser? Maybe 200 times your size?
No. There are legends in my hometown about it. It's supposed to be a super delicious fish. I told my brother about it, and he went out to sea to catch one for me. A few days later, he returned with a humongous fish slung over his shoulder. Anton and I were so happy. Are you sure that was a fish? Paimon thinks it sounds more like some sort of leviathan. Hey, Miss Nice Lady, let's go over there to see the boats. भाई ये कैसे दौड़ता है भाई? बोल के तो दौड़ा कर भाई ठीक है। What's wrong, Tooser? Are you tired? You don't seem so happy. I miss my brother. What? But we were just with him. Yeah, but for such a short time that it doesn't count. Take me to see my brother. I don't want to play anymore. Yep. You can have all the patience in the world, but it won't help you at a time like this. Well, we've played with Tooser long enough, haven't we? Paimon thinks we've tried our best here. Child said that he'd be by the river near Chingshu Pool. Why don't we look for him there? Yay! Let's go! Let's go! Doo-doo, 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 doo-doo. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, 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 mhm. Hello, Rect. Found him! There's Child! Wait, Good morning. he's talking to Oh, sorry. treasure Good morning, warriors? yeah. Oh, good afternoon. You know what I'm here for, I trust. Oh, you got lip. Making us guess, are you? If you want to join up, let me just say this first. Dandy kid like you ain't welcome. Oh, what a commendable imagination. Well, in the Tsaritsa's name, I suppose I should forgive you country bumpkins for your ignorance. For I am... Brother! You're selling them toys, aren't you, brother? That's so cool. I've always wanted to watch you work. Well, why, yes, of course. For I am, the greatest toy salesman in Snezhnaya. So cool. Huh? You playing games, pretty boy? So, will you buy or not? The toys that Snezhnaya produced 3 months ago will run you, yes, 600,000 more, to be paid in full. Toys? And how much money? Wow. Is that what it's gonna cost to fix that head of yours? Look at that. Spreading joy and laughter to everyone. That's what toy selling's all about. I'll say it again. Toys from Snezhnaya, 3 months prior, 600,000 mora paid in full. Yeah, no. Sorry, sales boy. The same joke isn't funny twice. Or you always cruising for a bruising? All right then. I'll make things a little easier for you. I'll join the treasure hoarders. Perhaps you'll be more willing to pay when we're brothers in arms? Would you listen to yourself? You think we just let any old person into the treasure hoarders? I'm not so sure you could hack it. Well then, why don't you put me to the test, dear seniors? I like to think of myself as quite talented in the field of treasure hunting. Looks like you're not gonna pack it up until someone packs you in. All right then. Show us what you got.
Truth be told, we've set up a shop here because there's a fine little loot cave nearby. The treasure hasn't been easy to get at. We've been at it for 2 days now. If you think you're up to snuff, why don't you have a crack at it on our behalf? Of course, that means that once you got it, it's ours. Don't try to sneak off with the prize now. Come on. If we can't do it, do you really think this guy stands a chance? An initiation test, eh? Interesting. It's been a while since I've been assessed by someone else. The loot's on the opposite cliff. We're gonna hang back here and watch the show. Huh, no problem. Don't blink, though, or you might miss it. तेरे को आज मैं ठोक दूंगा। अबे 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 मेरे को जाना है जल्दी से। अबे पहले बोल रहा था ना इतना जल्दी जाना है तो मैं टाइम वेस्ट। फिर से एक और बार हो जाएगा इस बार नो टाइम वेस्ट। The loot's on the opposite cliff. Huh, no problem. But you're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. मेरे को खेलना ही नहीं है मुझे। मिस हो जाता है यार हमेशा। देखो ये भी मिस हो गया। मेरे को जियाओ से आदत है डैश मारने का, अगर डैश ही नहीं है ऐसे ही चलना पड़ेगा। No time to lose. Well, I have the goods. Here you go. So how'd I do? Pretty well, I'd say. Brother, what do we do? This fellow isn't normal. Please, hold on a moment, sir. We need to discuss something amongst ourselves. He ain't here for an initiation. He just wanted to show off. Honestly, we'd be no match for him if he wanted to fight. Guys, do you think that maybe we're being robbed? I don't know. Surely he wouldn't have come here all dressed up like that if he was only after us. Unless maybe his words have hidden meaning. Snezhnaya, 3 months, 600,000. Oh, I get it. It was insider talk. I remember that the boss took out a 600,000 more loan from that Snezhnayan bank about 3 months ago, and still hasn't repaid it. So this guy must be the debt collector. But why didn't he just say so? What's with all the toy talk? And that's where you're still green. See, in a lot of professions like this, people speak in code to protect the privacy of their business partners and clients. Makes sense. Owing money is pretty embarrassing. This guy isn't one to mess with, I tell you. He's a professional. Way too professional. So, Mr. Salesman, my apologies, but we can't have you joining us. Oh? I didn't pass? I must say, I never imagined that the treasure hoarders would have such strict entry requirements. No, it's not that. What we mean is that you're too big a fish for our little pond. But we fully understand the situation with the, toys, sir. We'll fetch that 600,000 for you right away. I see. Well then, it's been a pleasure doing business with you. We get paid, and everyone stays happy. A wonderful outcome, wouldn't you say?
Yes. Couldn't agree more, sir. That's my brother for you. Toy sellers are so cool. Ah, Master Child, you're here. A new batch of fresh recruits have just... Hey now, keep your voice down. Can't you see I'm entertaining some clients over here? Clients? Well, anyway, the Motherland has dispatched a new batch of recruits to Liyue. They've just arrived, and I'm afraid we must trouble you to speak to them. Do I have to? Now is hardly the best time. I must apologize for troubling you, Master Child, but they are already waiting for you south of Lingju Pass. Every new batch of recruits must be baptized by the Tsaritsa's will, through the words of her harbingers. This has always been our rule. Yes. At present, Master Child, you are the only harbinger in Liyue. Please, everyone is standing in formation and waiting for you to bestow this honor upon them. Well, all right then, I'll go. Just give me a moment to catch up with my brother, and I'll be right with you. Do you have to keep working? Yes, Tusser. We have a group of new toy sellers fresh in from the Motherland, and I need to go teach them the ropes. Wow, that's great! When I grow up, I want to be a toy seller too. Can I go listen? I'm afraid you're still too young, Tusser. I'm not sure if you'd understand much of it, and most of it's rather boring anyhow. Why don't you go play with the Traveler instead? Sound good? But... I really do have to go now, Tusser. A lot of people are waiting to see me. I'll see you around, all right? Child really dotes on his brother, but now he's gotta ditch him again. Must be a really tough job. Yeah, you're right. He hasn't done himself any favors with the whole toy seller cover story. To think he'd go this far just to prevent his family from seeing his dark side. Maybe, but he has good intentions, doesn't he? Wait, where's Tusser? We were too busy chatting. Where'd he go? Seems likely. Tusser did seem really eager to hear his brother's speech. Either way, let's head over there first. Run away, run away, run away. Useless. Useless. Rise. Rain outlines your fate. Tusser, so you did come here. Shh, quiet. My brother's giving his speech. From this day forward, you will honor the oaths you have made to Her Majesty the Tsaritsa, and you will stop at nothing to bring Snezhnaya victory. You shall sweep through this land like the icy winds of the furthest north, as strong as the hoarfrost of Zeppeljärni Palace. You will chill the very marrow in our enemies' bones.
Her Majesty expects of you loyalty, ruthlessness, and meticulousness. For the trials that we face are harsh, and our enemies are like... like kites and rattle drums, who shall become redoubtable foes of Mr. Cyclops in the marketplaces of Liyue. Uh-huh. Kites are really fun, too. This is, of course, an analogy. As they say, the marketplace, too, is a battlefield. Uh-huh. So as your sales manager here in Liyue, I demand that you obey my every order. A refusal shall be considered a betrayal, and the price for betrayal is to be dishonorably discharged from the Liyue Institute of Toy Research. Whoa, that's really strict. Won't people be really sad if they get fired from the Institute? Huh? Seeking to please everyone pleases no one at all. Time to try something else. Forget it. Perhaps a round of hands-on training will suit us better. Hands-on training? After all, a strong body is the proof of one's capacity. Hey, did he just say that we're doing hands-on training? A Harbinger wants to spar with us personally? Oh, what an honor! I can't believe it. Are recruits like us really worthy? Am I hearing a hint of objection to this idea? Not at all, sir! That's the spirit. That's the spirit. Now come at me, you lot. Frozen. Suppress. Let's move Level 71 Dark Top. Artifacts. No place or village. Right there. This one's well. It's time. Amateur mistake. Amateur mistake. Rise. This one's well done. You're not going anywhere. I skill to the bone. Faster? Okay, faster. Rise. Let's end this quickly. Ready to set. No time to lose. Sacred name. Fortune preserver. Steady as stone. Rain. Riptide. Boring. Time to clean up. Frozen It was my honor to serve you. No, my sword. Life goes on.
Killjoy! We've only just begun! Riptide! Time to fulfill my duty. Useless. Rain outlines your fate. Don't be a Killjoy! We've only just begun! Brace yourself! This is gonna hurt! Bring it on! My duty. At an end. Oh, you got it. I miscalculated. Well then, do you all understand what I said earlier? Yes, sir! Excellent. And you all almost managed to get me limbered up. In other words, you've done well for new recruits. Thank you, Lord Harbinger! All right, hush now. Ahem. Now then, I wish you all glorious victory for Snezhnaya, for Her Majesty the Tsaritsa, and for yourselves. Dismissed! Brother, you are amazing! Oh, Tusser, what in the world are you doing here? There I was thinking that the Traveler had taken you to play at Wang Shuin. Yikes, that's some terrible acting. I told you, didn't I? I never pass on an opportunity to improve my strength. I'm not the man I was when we first met. You must mean my foul legacy transformation. It puts a great strain on my body, so it's best saved for crucial moments. I still haven't fully recovered from the injuries I suffered when I used it at the Golden House. Anyway, I'm no Senora. I don't use lethal force against recruits. Come on now. The foul legacy transformation? Does it make you stronger than Mr. Cyclops? You could say that. I want to learn to fight too. I want to be cool like you. Now, Tusser, fighting isn't about looking cool. You can only continue to get stronger if you know the reason why you're fighting. I can teach you, but think carefully first. Why do you want to fight? I want to protect Sister Tonya. That's a good answer, Tusser. When I return to Snezhnaya, I will start teaching you fighting techniques. Then you'll have to protect Tonya for me. How does that sound? Leave it to me. You know, Tusser's a good kid when he's not being so stubborn. You've had a nice long time here in Liyue, haven't you, Tusser? Isn't it about time that you took the boat back home? But you've been so busy, and we didn't get any time to play together yet. Tusser, you know I'm very busy at work. And hasn't it been fun traveling all over the place with a proper traveler? He's just worried he won't be able to keep up the Toy Seller act forever. Well, how about this? If you just do one little thing for me, I'll be a good boy and go back home. Oh dear, who taught this little devil to bargain? All right, what'll it be? Take me to visit the Institute of Toy Research. Do you think he means that ruin that the Millilith was talking about? The one where all the ruin guards were coming from? Done deal. After all, you've come all this way for me, Tusser. As your brother, it's only right for me to grant you one last wish before you leave. Exactly. Are you sure this is a good idea? It doesn't seem like the best place for kids. You should come along too, Traveler. This time, it's Tusser's turn to take you sightseeing. Let me think. Ah, yes, the Institute of Toy Research is not far at all from Lingju Pass. Now, Traveler,
You're not the sort of person who would disappoint a kid now, are you? The brothers are ganging up on us again. Oh, fine. We'll go. Useless. No, my sword. Understood. This one was well done. Go the interview the toy research. Here we are. Welcome to Liyue's Institute of Toy Research. Yeah, we're here! I can already hear the sounds of machinery inside. Awesome! What is this place? And how do you know about it? Based on my limited understanding, I believe this is one of Dottoro's research facilities. Dottore is another one of the Fatui Harbingers. He loves tinkering with old things. It's a personal passion of his. So, he converted these ruins into a Ruin Guard research lab. Huh? So the ruin guards are built by the Fatui? No, they have much closer connections to the Abyss. So, strictly speaking, they're as much our enemies as anyone else's. We just do research, nothing more. As to why the Ruin Guards have been moving outside of this area recently, I can only imagine that he's gotten bored of playing around with them and has lost interest in this place. Wow, yet another Harbinger with a bad attitude. But at least this explains why you were totally okay with bringing Tooser here. Seems you did your homework ahead of time. Well, I wouldn't go quite that far. I actually have no idea what this place is like on the inside. Wait, so are you or are you not worried about your brother's safety? Of course I am. But no matter what the danger is, I will parry it. Isn't that what any older brother would do? Even Tooser understands that, now that he knows what he's fighting for. It's the very same reason that's been nestled in my own heart for so many years. What are you guys chatting about? Come on, let's go in! All right, follow me. Brother, someone was saying that Mr. Cyclops is a killing machine. Were they now? What a silly thing for them to say. And you shouldn't go repeating it either, Tooser. You're far too young to be talking about such violent topics. Yeah, I knew that they were lying anyways. Mr. Cyclops is here to defeat the bad guys and protect the world. He's my favorite toy. Right. With Mr. Cyclops around, the bad guys won't ever get you. That's right. Okay, I'm going to go play with Mr. Cyclops now. Hey, Tooser, wait up! The door's shut. Will Tooser be all right? There's another path over there. Let's move.
भाई चाइल्ड को क्या क्या करना No पड़ता time to है। lose. No time to lose. Oh my god, wow. अबे वो क्या करना क्या है मुझे? इधर जाना है। अभी क्या करना है? Yep, I could get used to this. प्रो बोलते। अरे यार इनके साथ फाइट ये सब करना पड़ेगा अभी। No time to lose. Oh, the door opened. Was that you? Child has to handle child. चुप रहे भाई, चाइल्ड को कुछ नहीं करना पड़ रहा। मेरे पे डाल दे रही है बार That's बार हर right. 2 सेकंड में। But give me a moment over here, Tooser. I need to make sure that everything's safe. Maybe I shouldn't have spoiled him quite so much. हेलो सर तू सबसे बड़ा नूब, चुप रहे। नूबेस्ट ऑफ द नूब्स। Those ruin guards have all been struck You are up. the biggest Where noob, are they bro. being taken to? I don't know, but if there's a chance it's where Tooser is, we need to stop this before things get ugly. बहुत हुआ भाई, मैं डैगर निकाल रहा हूँ इसका। कभी भी स्विच कर सकते हैं, ये मस्त लगा मेरे को चाइल्ड का। मैं सोच रहा हूँ चाइल्ड ले खोलूँ, डैगर और ये मैं स्विच कर सकते हैं। बट चाइल्ड का बहुत सारा डिसएडवांटेज है, बहुत सारे कैरेक्टर के सामने ये बहुत वीक हो जाता है। फत्तू इसके सामने बेसिकली आज क्यों गुस्सा है इसका ज्यादा? आज मैं गुस्सा नहीं हूँ, रोज मैं ये सुन के थक गया हूँ। और इसके 2 अल्ट भी है। Shouldn't let your guard down. No time to lose. Tooser, see that big stone cube in front of you? I need your help. Yay! Do I really get to help my big brother out? You bet. Now I'll count down from 3, and then we touch it together. Ready? 3, 2, 1. That's bright. What is that? It's a witch ray that will turn you into a little lamb if it hits you. So stay out of its way. कुछ नहीं हुआ, चल छुट्टे। Life goes on. I am not just a shadow. I mean, I am not Bhuta. Useless. Oh, मेरे को क्या करना है? मैं जियाओ का डैश करके आ गया इधर। क्यों वेट करना था मशीन्स का?
Legends never die. Wheel of Life. Calling you. No time to lose. क्या करना है मेरे को इधर से मारना उसको क्या कर सकता हूँ मैं Let me think what can I do I don't wanna take you there I don't wanna take you there इधर पे क्या करना है मुझे कोई बताओ रे मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है What do I do now? What do I do now? I'm here to sail on the Lashula Island. What do I do now? Oh. भाई क्या करूं मैं हेलो कोई तो कुछ बोलो भाई मेरे को इधर जाना है पर कैसे जाऊं समझा अब समझा Gimme Bean Bro Back together at last. You're not hurt, are you, Tooser? Hurt? No way. This is really fun. Fun for you, maybe. We were all scared to death. What's over there? Wow, this room is huge. Is this where Mr. Cyclops takes his friends when they come to visit? It is. Impressive, isn't it? Now, how about a little game of hide and seek? Huh? Now? But... I have a surprise for you, you know. A surprise? Oh, what sort of surprise? Don't worry, you'll have the chance to look for it later. But before that, you have to close your eyes, turn around, and count down from 60. Okay, 60 is a really long time, though. 60, 59, 58. There's not much time. Let's clear all these hazards out. 48, 47, 46, 45. Are you guys okay? What's all that crashing and banging? Don't worry, it's all part of the surprise. 16, 12, 10. Hey, no cheating. You skipped a few numbers, you little rascal. You noticed. All right. 15, 14, 13. Give me another 10 seconds, Tooser. Still hiding. Huh. Now who's the cheater? All right, 10 seconds, that's it. 10, 9, 8. ओ भाई 6, 5, 4, 3. चाइल्ड बेडस 2, 1. Coming, ready or not. This is everything I've ever dreamed of. It's Mr. हेलो Cyclops क्रिस कैसे हो world.
actually pulled it off. And the way he knocked those ruin guards around was like they really were kids' toys. But Paimon wonders if he'll be alright after using the Valve Legacy transformation again. Yes, bro, क्या हो गया? Awesome! Boy, if these Mr. Cyclopses weren't so big, I'd sure love to take one home. भाई ये पागल है ये बंदा. Wait, where'd he go? Where'd my brother go? बताएगा इसको सब सच. Aren't you guys supposed to be playing hide and seek? Oh, that's right! I was so excited that I forgot all about our game. Well, let's go look for him together, okay? It's a good thing that you two found me first. Looks like using the Foul Legacy transformation while I was still injured took more out of me than I thought. I have no idea what I'd do if Tooser saw me like this. Look at me, deflated as a burst balloon. As I recall, you have siblings too, yes? I figured that you probably wouldn't take me out in front of my little brother. Really milking this situation, huh? Like I said, I can never pass on an opportunity to test my limits. And that's why I, Tartaglia, am always getting stronger. Anyway, childhood dreams are all too easily shattered. Even if you just leave them be, they will fall, so someone has to protect them, right? If you make a promise, you keep it. If you make a mistake, you apologize. भाई मेरा स्ट्रीम नहीं रहेगा भाई. मैं नहीं जानता कुछ. अरे जापानीज कर खेलना है तो. भाई मेरा स्ट्रीम जाएगा ना भाई. मतलब नहीं. And if you give someone a dream, you defend it to the end. That is what family is all about, isn't it? भाई मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा. Remind you of something, did I? Quit the tough guy act already. You need to see a doctor right away, mister. जापानीज में सब कुछ अलग हो जाता है भाई. चलो थोड़ी देर में. A fine suggestion, but first, I have a little something for Tooser. Please give it to him on my behalf. Huh? Is this a Mr. Cyclops action figure? Indeed. I had made it to order by a smith some time back. I had intended to give it to him on my return to Snezhnaya, but it seems that it would make a better souvenir at this point. Wow. Now that Paimon thinks about it, Child's family are really lucky to have him, aren't they? I'll also need you to explain my abrupt departure to Tooser. You'll help me out, won't you? The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off so you never lie again. Ah, that nursery rhyme brings back so many delightful memories. Tooser taught you that one, did he? All right. Thank you. I can't find him anywhere. Where did he go? What? Why? Why would he leave without me? Yeah, so he had to leave in a real hurry. He didn't abandon you here on purpose. Oh, that's great. But still, I was kind of hoping we could play here a little longer. Wow, look at this! I never knew that they made Mr. Cyclopses in this size.
You're really loving it, huh? You bet! My brother is the best big brother ever! You had a tour of Liyue, you met your brother, visited the Institute of Toy Research, and got yourself a souvenir. Now that's what we tour guides call the perfect trip. Do you think you're ready to head back to Snezhnaya now? Don't worry. I know I can't get my way all the time. That'd just be annoying for everyone else. So, let's go. Useless. Bang! With that, the fate of Yue cuisine is disgusting. Boring! Ma'am, young Master Tusser, I've been waiting for you. Did Child send you? That's correct. Master Child instructed me to arrange for young Master Tusser's return trip. Please, come this way. Who are you? My big brother always tells me never to go off with strangers. But you've been following us around this whole time. Yeah, that's because I've known who you are all along. What? My brother told us all about you in a letter he sent back home. Sister Tonya read it to me. I actually recognized you the moment I saw you. I just couldn't remember your name. What a strange twist of fate. Not at all. In fact, he said that if he ever had the chance, he'd quit his job and join you on your adventures. Young Master Tusser, the boat to Snezhnaya will dock soon. We'd best prepare for boarding. Gee, time really flies when you're having fun. Well then, see you, Miss Nice Lady. I'll wait for you back home. You definitely have to come visit Snezhnaya sometime.
Yeah, I'm back. Yeah! Pinky promise, pinky promise! You make a pinky promise, you keep it all your life. You break a pinky promise, Paimon throws you on the ice. The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off so you never lie again. It's a promise then. Bye-bye, Tooser. Have a safe trip. Hey. Child? So you were here this whole time? What are you hiding for? Why didn't you come and say goodbye? Partings are special moments. If he spent his final moments in Liyue seeing me all haggard and weak like this, that's not a memory I want him to leave with. Still, it is a shame that I couldn't see him off by myself. I should have been the one taking him back. I do have subordinates to escort him, but I still feel a little uneasy. Jeez, don't you think you've spoiled him enough already? I can't quite explain it, but somehow I felt much more at ease leaving him in your care. And to think that not long ago we... Ah, yes, I almost forgot. Remuneration for your services, which I really couldn't have done without this time. Aha! So you do have a heart after all. What? One other thing. Don't forget our promise now. Let's have a rematch when we get the chance. This time, with my honor as a harbinger on the line. Hello there. भाई ये मिशन करने में 2 घंटा लगा. ओ तेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ. लॉल. Don't come crying to us when you lose all over again. Don't Regardless of worry, who wins or this is not loses the our next longest bout, mission in the I'd story also like to missions. invite you over to my home. I'll introduce you to my other siblings, Tonya and Anthon. They're great kids, and I'm very proud of them both. We'll take you up on that offer. Child अच्छा बनता है यार Mostly थोड़ा. because we already made a pinky promise to Tooser. हाँ इसका मांगा कॉमिक्स भी है. लुमिन को. I'm sure that he'll be very excited to see you too. ठीक है. Well, that settles it. I'm looking forward I to ain't it. saying anything. Now, farewell, my friends, till we meet again in Snezhnaya. Okay, what is the name of male स्नेजनाया कौन सा traveler? नेशन बनेगा? वो एक अलग जगह है. It's अरे like नहीं एक नेशन होगा स्नेजनाया बाद. yes, स्नेजनाया एक नेशन होगा. कौन सा होगा ये नहीं पता भाई. ओ बाय द वे ये वाला बक्सा खोलने के बाद 200,000 मोरा बहुत पहले खोल दिया मैंने. इन YouTube में देखा था. नहीं मुझे एक दिन किसी ने बोला ये बॉक्स अभी भी सनक ने नहीं खोला है, यहाँ पे है. मैंने बोला ओके व्हाई नॉट. यार ये ट्यूसर का वो पाउच ऑफ मोड़ा से मोड़ा एक्सचेंज कर सकते हैं. हाँ वो ट्यूसर का पाउच मैंने तो बहुत ट्यूसर का हैगल मेरे किया. को तो चाइल्ड का भी पाउच है. वो जब जोंगली वाले में दिया था उसने एक बैग ऑफ मोड़ा. यस मैं सब में वो करता हूँ. 1 रुपए. ए नहीं 10 रुपए का ऊपर नहीं देंगे. जो दे रहा वही चलेगा. यार मैं यार हम तो 10 रुपए मेरे पे कितना प्राइमो जेम्स हुआ. आहा ये देख के जो खुशी मिलता है ना. क्या खुशी मिलता है? अभी भी रोल ही नहीं किया. रोल छोड़ तेरा ये मिडिल ऑफ नोवेयर कहां से आता है? क्या कितना रोल किया है देखेगा. जियाओ लास्ट टाइम मिला तो उसके बाद मैंने 10-15 पेजेस रोल कर दिए. 10 पेज रोल हो गए जियाओ मिलने के बाद. मतलब 60 स्पिन्स मतलब एक गोल्ड मिलेगा. हाँ मिल जल्दी 100% तो मिलेगा ही. और अगर मैं 50-50 नहीं 50-50 हुआ नहीं है. 50-50 हुआ नहीं है. ये थोड़ा ओवर 50 हो गया है. 50-50 जीतूंगा तो Leoli Pavilion, best seafood in town. I said over 50 हो गया है. देख अगर मैं 50-50 जीत गया तो मेरे को डिलक्स मिलेगा. डिलक्स पेन में अगर मैं 50-50 हार गया सो आई डोंट माइंड. मेरे को जो भी मिलेगा चलेगा. डिलक नहीं मिलेगा. अगर ये हुआ ना अभी you have a chance to get 5 स्टार. इसके बाद वाला और एक 50 स्पिन जो होगा उस पे एकदम लाइक तेरा you have a chance to get the banner character.
नहीं वैसा नहीं होता, 50-50 चांस होता है बैनर कैरेक्टर मिलने का। मतलब अगर तूने हाँ स्पिन पता किया है। एक लेजेंडरी आया तेरे को या तो मिलेगा, और अगर नहीं नहीं बट मिला तो नेक्स्ट स्पिन पे 100% मिलेगा, नेक्स्ट वही 5 ना स्टार स्पिन वही पे। ना वही ना फर्स्ट टाइम पे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। बट देख मेरे को मिलने के चांस पता है क्यों है भाई, यूट्यूब में देख रहा था, मेरे को देख फर्स्ट 5 स्टार मेरे को चीची मिला था, उसके बाद जियाओ मिला था। तो अभी मेरा 50-50 जीतने का चांस थोड़ा हाई है, बिकॉज मैं अभी तक एक भी 50-50 जीता नहीं हूँ इसीलिए। मेरा तो देख 70 स्पिन्स हुआ है। आई डिडंट गेट अ 5 स्टार। बट हाँ देखो अब कैरेक्टर बैनर मिल सकता है। मेरे को यार इसका बैटल पास खरीदना था, बट छोड़, मैं एक और वेकेंड मून खरीद लूंगा क्यों इसमें। खरीदेगा? तेरे पे तो अच्छा स्वॉर्ड कैरेक्टर भी है नहीं है। नहीं मतलब डीलक के लिए मेरे को ये चाहिए था, जो भी होता है ये वाला। वो फालतू, उससे बेटर वो क्राफ्टेड वाला है पता है। नहीं वो उतना अच्छा नहीं है, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, वो बंदा बोल रहा था कि ये एक बैटल पास वाला चाहिए डीलक के लिए, या तो वोल्स ग्रेवस्टोन चाहिए, बाकी सब टट्टी है। अरे नहीं या तो उतना ये भी कुछ नहीं। चलेगा, ये कैसे किधर है, क्या कहते हैं इसे, जो जो फ्री वाला है। ये तू भी चलेगा। रिफाइनमेंट ब्लैक क्लिफ अच्छा है। ब्लैक क्लिफ अच्छा है। बट बैटल पास वाला देख रहे हो, मैं बताता हूँ किधर है। बैटल पास वाला उतना अच्छा नहीं है अनटिल अनलेस रिफाइनमेंट 2-3 होगा। रिफाइनमेंट 2-3, ये रिफाइनमेंट होगा इसका ना। हाँ भाई। हाँ इसका इसका होगा। कैसे? अभी बोल अभी खर्चा करेगा तू रिफाइनमेंट 2-3 के इसका लिए? रिफाइनमेंट कैसे होगा भाई, अगला बैटल पास में भी सेम आएगा क्या? नहीं बैटल पास पे तो नहीं, वेपन ड्रॉप्स में मिलता है। हाँ वेपन बैनर हाँ। Copy of each invoice is sent to the merchant. बंद कर दिया। भाई मैंने 2-3 बंदे को देखा भाई ये सब सोर्ड्स यूज करने बिफोर बैटल पास। रिफाइनमेंट 1-2-3 उन लोगों को कैसे ही मिला? वो लोग खर्चा किया है। अगर मेरे को डीलुक मिल गया, मैं बाकी के कॉइन्स का वेपन बैनर पे स्पिन कर दूंगा। आई एम क्वाइट श्योर तेरे को डीलुक नहीं मिलेगा। वो तो तूने भी बोला था तेरे को जियाओ नहीं मिलेगा। ना वो तो हाँ मुझे पता है। और अगर डीलक्स से पहले गानियो रीलोड हो गया, मैं पक्का स्पिन कर दूंगा उस पे, आई डोंट केयर। अबे अबे दिन तेरे को क्या बोलते हैं, कितना सारा फ्रीज चाहिए भाई? पानी चाहिए, फ्रीज तो चाहिए। देख तेरा तू दो टीम बना रहा है ना, एक टीम नहीं ना? आई होप। हाँ 2 टीम बनाऊंगा ना। देख फर्स्ट टीम में मेरा रहेगा जियाओ, चीची, बेनेट और डीलक, ठीक है। बेनेट नो अभी जो एग्जिस्टिंग है। अभी 2 टीम नहीं है मेरा, अभी सुन ना। अभी मेरा मेरा तो फ्यूचर प्लानिंग सुन, पहले मेरा कार्ड फ्यूचर मार। तेरा प्लानिंग सुन। फ्यूचर प्लानिंग नहीं सुनना है। तू अभी लेवल 40 हो गया, तेरे को स्पाइरल अबिस करना है प्राइमो जेम्स के लिए। तो तेरे को दो टीम बनाना है अभी। तो अबे दो टीम सुन किसको ना बनाएगा अभी भाई, के लिए? अभी मैं नहीं कर रहा ना, मेरे पे बहुत प्राइमोजेम से, अभी मैं नहीं कर रहा स्पाइरल, अभी तो मेरी बात सुन। देख समझ, जियाओ, चीची, बेनेट, डीलक, ठीक है। अबे साले तेन तेन तो मैं भी बोल सकता, अगर मैं टाटक लिया के लिए स्पिन किया वो मिल गया तो मेरा टीम पे भाई वो हाँ तो साला। बोल सकता है, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे पे डीलक ली सब कुछ हो जाएगा, मैंने तो सिर्फ बोला डीलक, एक 5 स्टार बोला, जो कि मिलने के तो चांसेस है कॉज मेरे पे प्राइमोजेम से। देख डीलक, आई मीन जियाओ, चीची, डीलक, बेनेट, ठीक है। और सेकंड टीम मेरा होगा निंगवांग और डायोना, निंगवांग, अबे सुन ना, निंगवांग, डायोना, जियो ट्रैवलर, निंगवांग, डायोना, जियो ट्रैवलर और तेरा रेजर। व्हाट? तेरे पे रेजर नहीं है, बेडू अरे है। मिलेगा ना, रेजर मिलेगा। वो 4 स्टार तो मिल जाता मिलेगा। अबे 4 भाई स्टार की बात कर रहा हूँ भाई, 4 स्टार तो ऐसे मिल जाता है। अबे इसका तो क्रिट रेट नहीं है, ये नहीं नहीं सुन क्या क्या भाई, क्या ये तूने बोला है? बर्बाद है, ये बर्बाद है, ये अबे इसके टट्टी बारे है। में नहीं बोल रहा हूँ, अबे इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ तो भाई। कौन सा?
प्रोटोटाइप आर्क है का, इसका बर्बाद है, रिफाइनमेंट कर सकते कतई हैं। बर्बाद भाई, टट्टी है ये। उन्होंने तू कहा है तू कि सुन 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 सुन, मैंने तू पूरा F2P डीलक। तू F2P प्लेयर है ना? अबे सुन, इससे अच्छा ब्लैक मैं लिस्ट है। बोल कौन देख, मैंने पूरा डीलक गाइड देखा है। उन्होंने कहा है कि डीलक का डीलक जैसे जैसे लेवल अच्छा अप छोड़, करता है, नहीं सुन नहीं सुन सुन। छोड़, अगर डीलक अबे नहीं सुन, मिला तो तू स्वॉर्ड लेके क्या करेगा? अगर डीलक नहीं मिला तो दूसरा जो कैरेक्टर मिलेगा उसका सेटअप कराऊंगा। हाँ तो देख, वो छोड़, मेरी अगर बात सुन। मोना मिला तो नहीं, अगर मोना मिला तो बोल अभी। नहीं, मेरी बात सुन, नहीं नहीं, पहले मेरी क्लेमोर बात ही सुन, होगा, पहले मेरी बात क्लेमोर ही सुन। होगा, क्लेमोर कैरेक्टर ही होगा। अबे सुन ना साले, डीलक जो अबे है उसका अबे क्रिट, उसका क्रिट डैमेज पर लेवल अप बढ़ता रहता है, तो उसका क्रिट रेट बढ़ाना है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वेपन अगर लेना है तो क्रिट रेट वाला वेपन ही चाहिए, बाकी कोई वेपन नहीं चलेगा डीलक पे। अगर सोच ले तेरे को कैचिंग या कोई अदर स्वॉर्ड कैरेक्टर मिल गया तो क्या करेगा देन? स्वॉर्ड कैरेक्टर मिला तो मैं मास्टरलेस आर्ट्स का खरीद लूंगा, क्रिट रेट वाला। और देख मेरे अभी कैचिंग का सामान ये, तो चला जाएगा, कैचिंग मिलेगा नहीं, कैचिंग तो ये वाले स्पिन पे मिलता है, ये वाले। मैं अरे भाई मैं बोल रहा हूँ देख देख अगर देख, मिल गया तो मैं चांस बताता हूँ इधर सबका क्या क्या है। होगा। इधर नहीं, चांस सबका नहीं होता है भाई। इधर दिखाता हूँ देख, और इधर पे तेरा 6 ही कैरेक्टर का चांस होता है, हर बार रीरोल होता है, ठीक है। इस बार यहाँ पे कैचिंग है। कैचिंग नहीं है। हर तो इस बार है ना, नेक्स्ट टाइम चेंज हो जाएगा ना। देख 6 कैरेक्टर ही है इस बार, नेक्स्ट टाइम कुछ और आ अब तो जाए, आ सकता है। मिल सकता था, अभी भी डिलुक मिल सकता है, बाद में नहीं आया तो देन क्या होगा? डिलुक का बैनर जब आएगा बट मैं तभी स्पिन करूंगा ना, ज्यादा चांस होता है। डिलुक का बैनर अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ बट आएगा। 1 साल उत, बाद। उतना टाइम नहीं लगेगा भाई, इन्होंने कहा है रीरन होगा जल्दी से। हाँ मैं यूट्यूब पे रीरन, देख रहा था। जल्दी से नहीं, रीरन होगा जल्दी से नहीं। अ, एक दो अपडेट्स में ही हो सकता है। अभी वेंटी और तारतागलिया का हो रहा है, इसके बाद वाले में डिलक का हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद वाले में 100%। नहीं क्ली होगा क्योंकि क्ली पहले था, उसके बाद डिलक। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, एक दो कैरेक्टर रीरन होते ना, एक हर एक बार में, वही तो बोल रहा हूँ तेरे को। इस बार वेंटी और तारतागलिया रीरन हुआ, आई नेक्स्ट टाइम काइंड डिलक। ऑफ आई काइंड ऑफ डोंट माइंड, क्योंकि मेरे को कभी कभी लगता है कि तू इतना टाइम के लिए वेट करेगा तो तू ये गेम ही नहीं खेलेगा उतना। नहीं खेलूंगा ना भाई, अभी इसके अपडेट्स आने बाकी है, अभी 7 नेशंस आएंगे। अभी तो तीसरा नेशन आएगा अगले अपडेट में। अ, अ, पढ़ाई। क्या? हाँ। ओ भाई। नहीं मेरे को बता सर पे, सुन सुन सुन। हाँ तू कितने साल का है? बता, नहीं नहीं बता। आई एम 18 देन। और मैं सो कितने व्हाट साल का इज हुआ दैट? तू? हाँ तो मेरा मेरा पढ़ाई जितना भी ज्यादा हो बिकॉज ऑफ माई एज, इसका मतलब नहीं कि तेरे एज पे मैंने पढ़ाई नहीं किया है। नहीं मैं बोल रहा हूँ, नो नो नो, देख 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 इट्स देख देख नॉट। देख, अगर तू 18 पे खेल सकता है तो अभी भी मेरे पे 5 साल है 18 तक हाँ पहुंचने में। मैं क्यों खेल रहा हूँ पता है 18 पे? बिकॉज स्कूल खत्म होने के बाद, नॉट बिफोर दैट। अगर ये कोरोना वायरस नहीं होता मैं नहीं खेलता। कोरोना वायरस दैट इज रियल। Made another handsome अच्छा son स्कॉर्पियो, today. तेरे को पता है मैं एक स्पिन देख रहा था, एक बंदे ने स्पिन किया, उसको इधर से स्टाफ ऑफ वोमा एंड वुल्फ ग्रेवस्टोन दोनों एक साथ मिला। एक और ही उसको मोरा मिला। अ, अरे इसको पता नहीं है, नेवर माइंड। वुल्फ ग्रे भाई दोनों मिला तो अच्छा है, और वेपन का बहुत ज्यादा चांस ये होता है वो दोनों बेस्ट वेपन वेपन बैनर है, में। ये दोनों बेस्ट वेपन है, वेपन आई नो, बैनर। एक ढीलक के लिए बहुत अच्छा है, और एक तो भाई कोई भी वो क्या बोलते हैं, हमारा जो नया लड़की आया है हूताओ, उसके लिए। किसी के लिए भी चलता है नहीं ये। मैं वुल्फ ऑफ ग्रेवस्टोन के बारे में नहीं बोल रहा था, स्टाफ ऑफ होमा। हाँ ये किसी भी में चलता है। हाँ बट इसका नया नाम आ गया, स्टाफ ऑफ कोमा। स्टाफ ऑफ कोमा, आई मीन इसका पता है क्या बोलते हैं लोग? स्टाफ ऑफ होमलेस, एंड स्टाफ ऑफ कोमा। होमलेस। अरे सुन, स्टाफ ऑफ होमलेस, वुल्फ्स वॉलेट स्टोन। You have to और spend ये अगर किसी 500 को मिला ना स्पिन करके, उसका लक सबसे टट्टी है। ये बहुत घटिया है। ये तो और ज्यादा। नहीं ये अच्छा है, क्या बोला ये घटिया है, इसमें क्रिट क्रिट डैमेज डैमेज, है।
तू बुक से क्रिट डैमेज करेगा। हाँ तो तू निंगवांग यूज करेगा तो क्रिट डैमेज बहुत कम का आता सिर्फ है। निंगवांग में काम में आता है, नहीं बाकी नहीं, किसी और कैरेक्टर मोन पे काम में आता है। नहीं, मोना से उतना क्रिट डैमेज होता नहीं है, मैं यूट्यूब पे सबका देखा है। You want to make a DPS इसका क्रिट Mona? डैमेज पता है कैसे होता है? cause ये ऐसे पार्टिकल्स फेंकता है, और मोना से क्रिट डैमेज नहीं होता नहीं, है, मोना से एओई होता है। मोना का अल्टी बहुत डैमेज बूस्ट कर हाँ, देता उससे है। एओई होता है, क्रिट डैमेज नहीं होता है मोना से। मोना Yes, पे I काम में know. नहीं आता है वो तेरा दूसरे कैरेक्टर पे काम में आता है, निंगवांग जैसे। हाँ तो मैं अभी क्या करूँ? और हाँ, कैचिंग का एक वीडियो है, why is it bad? But it's because कैचिंग का फैन बॉयज कैसे बोलते हैं पता है? They are called as kittens or something. Catching के fans are called kittens, and they talk about catching as queen, and they lick ठीक है their ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस बस। they simp so hard. They have never seen a ठीक है character ठीक है do क्योंकि स्कॉर्पियन, उसका ठीक second है। attack में shows her ass. अरे ठीक है भाई, इतना ज्यादा पर्सनल क्यों ले लेता है तू? No. तूने बोला था एक वीडियो है. I checked out the video and that is why the guy is a #1 catching main in NA and वो बंदा बोल रहा है I hate catching because of these things. भाई चुप रहा, वो सब पर्सनल चीजें वो नहीं बोलने चाहिए ऑन स्ट्रीम। हाँ, and except for that, अगर सोलो कैचिंग इज वेरी हार्ड टू बिल्ड, वही एक प्रॉब्लम है उसका भाई। 5 कॉम्बिनेशन है। थंडर सूदर वाला 4 पीस, थंडर फ्यूरी 4 पीस, ग्लैडिएटर फिनाले 4 पीस, 2 पीस ग्लैडिएटर फिनाले, 2 पीस ब्लड स्टेन, 2 पीस ग्लैडिएटर फिनाले, 2 पीस थंडर सूदर, 2 पीस ग्लैडिएटर फिनाले, 2 पीस क्या बोलते हैं, हाँ मैं उतने भूल में गया। हाँ, भाई तेरा थंडर एंड जोंगली फ्यूरी। 400 के डैमेज करने लग जाएगा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इतना सारा आर्टिफैक्ट है ना, मतलब ये एक अच्छा चीज भी है बट एक बहुत बुरा चीज है क्योंकि तू बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा चीज इसलिए सबसे कि पहली you can बात है, customize। इतना आर्टिफैक्ट तो कलेक्ट करते करते अगर एक कैरेक्टर पे आर्टिफैक्ट के लिए तो ग्राइंड करता है ना, वो कैरेक्टर गॉड बन जाएगा। अरे वही तो अभी लाइक नहीं तेरा और कोई आर्टिफैक्ट जैसे तेरा बेनेट के लिए डीलक का बहुत इजी है, बेनेट को तो मेडन्स मिला। हाँ, डीलक का भी इजी है, बेनेट डीलक का को भी सिर्फ इजी है। फायर वाला फोर्सेट दे देना है, खत्म, टाटा बाय बाय, हाँ, सबसे ज्यादा डैमेज डील करता है। क्रिम्सन स्विच का फोर्सेट जो मेरे पे अभी है, इवन दो मेरे पे डीलक नहीं है, सो नेवर माइंड। तो हाँ लाइक फायर 5 स्टार डीपीएस जो हूता एंड डीलक, उन लोगों को वही फोर्सेट देने से हो जाएगा। इवन रेजर को जस्ट ग्लैडिएटर फिनाले देना और कुछ नहीं देने का, वो छोड़ के कुछ नहीं चाहिए। जिंक्यू को भी लाइक तू फोर्सेट नोब्लेस ऑब्लाइज, सुक्रोस को भी फोर्सेट वर्डेसेंट, मतलब सिंपल है और कुछ नहीं चाहिए। बेनेट का लाइक उसका भी वो डिपेंड्स, लाइक यू वांट टू मेक हिम सपोर्ट सब डीपीएस एंड हीलर, देन उसको नोब्लेस ऑब्लाइज दे 4 पीस, बट यू हैव टू हैव वेरी गुड नोब्लेस ऑब्लाइज पीसेस। ऐसा नहीं कि नोब्लेस ऑब्लाइज पीस में जस्ट एचपी है। नेवर माइंड। इवन लाइक 5 स्टार कैरेक्टर्स, एवरी 5 स्टार कैरेक्टर अच्छा है, बट तेरा कोई 5 स्टार कैरेक्टर बहुत इजी टू बिल्ड, कोई 5 स्टार कैरेक्टर सो हार्ड टू बिल्ड, तेरा गांड मार देगा। तो हाँ, कैचिंग एक है जो 5 स्टार कैरेक्टर जो गांड मारता है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ फ्री टू प्ले प्लेयर को 5 स्टार के लिए मत जाओ, 4 स्टार बिल्ड करो। हाँ, 4 स्टार क्यूब बिल्ड करना बेटर है, पता है, कॉन्स्टेलेशन भी मिल जाएगा, प्लस क्या बोलते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट, पैसा भी नहीं चाहिए। एंड C6 यांगलिंग हुताओ से C0 हुताओ से बेटर है। वो तू उसको बोल, क्या बोलते हैं अभी फ्रीजी को बोल, उसका C4 हो गया, 5 है उसका। हाँ सॉरी C5 हो गया, उसको बोल विश करने के। यांगलिंग बैनर है क्या? बैनर में यांगलिंग है क्या? है, ओ भाई उसको बोल अभी करने के लिए। मेरे को चोंग्यून C4 मिल गया है भाई, मुझे जिंक्यू चाहिए था।
मैं तो इसीलिए स्पिन नहीं कर रहा, अच्छा सा एक बैनर सोच के करना चाहिए। भाई मैंने बेनेट के लिए स्पिन किया था, साला 3 बार बड़ा मिला। मेरे को 2 मिनट मिल गया तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। एंड आल्सो wrecked here, secretly laughing. But jokes on you, you made Bennett a DPS. रेक्स पे उसका मीम बन गया। It's a joke, okay, but still, like, seriously, you put Bennett a DPS. Why, man? अगर मेरे को डीलक मिला ना स्कॉर्पियन तो मैं डीलक को मेन डीपीएस रखूंगा। वो तो हाँ, वो मेन डीपीएस है। What do you expect? डीलक को तो क्या बनाएगा? और जियाओ को रखूंगा अल्ट ओनली कैरेक्टर। डीलक से फाइट करके जैसे जियाओ का अल्ट आएगा स्विच करके अल्ट मार के जियाओ ले लूंगा फिर से। मेरे हिसाब से लाइक डीलक के साथ तेरा जिंक्यू अच्छा चलेगा। नहीं डीलक और बेनेट। हाँ डीलक एंड बेनेट तो वो तो है, बट तेरे पे बेनेट नहीं है। अरे नहीं वो मास्टरलेस शार्ड्स का खरीद लूंगा ना जब आएगा, तो जाएगा एक तेरे पे मास्टरलेस शार्ड है अभी? मिल जाएगा, इसका प्राइमो जेम से देखा है भाई। हाँ, ओ बाय द वे बेडो मिलने के बाद ही मैंने एक पिन किया, मेरे को एक और पर्पल मिला। गेस कर क्या मिला उस पर्पल में? क्या मिला? I am the only one who didn't get Kaya or Amber. टेंशन ना ले, बाद में जब तू स्पिन करेगा तेरे को भर भर के मिलेगा। Pretty proud of it, क्योंकि मेरा नॉर्मल स्पिन में भी मुझे रेजर एंड चोंग्यून मिल रहा है, so I am pretty proud of that. भाई तेरा लक अभी अच्छा है, जब खराब होगा ना ऐसा चीजें मिल जाएगा तो मैं गेम छोड़ देगा। तो उतना अच्छा नहीं है, आई एम वेरी मॉडरेट लक है मेरे पे। मेरे को 4 स्टार कैरेक्टर्स अनडाउटेडली मिल रहा है अच्छे अच्छे, बट 5 स्टार नहीं मिल रहा है मेरे को। गेम 4 स्टार अच्छे अच्छे दे रहे हैं। कैचिंग खराब नहीं, कैचिंग इज वेरी हार्ड टू बिल्ड। मेरे को डोमेन नहीं करना है इसका, कांड मार देता है। कैचिंग को तो एक चीज के लिए खेल सकता है, उसको पूरा एनर्जी रिचार्ज के चीजें दे और उसको तो सपोर्ट रख दे। इलेक्ट्रो कैचिंग नहीं मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं पता है क्यों बोल रहा हूं वो करने के लिए। देख उसको तू सिर्फ सामान दे एनर्जी रिचार्ज का और उसको तू सेकंड डीपीएस बना दे। उसका जैसे अल्ट आएगा अल्ट मार के मेन डीपीएस पे शिफ्ट। नहीं देख, इलेक्ट्रो कैचिंग इज वेरी गुड, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो कैचिंग एनए का नंबर 1 है वो बोला था। और इलेक्ट्रो कैचिंग के लिए यू हैव टू ग्राइंड सो मच। किधर गया वो नंबर 1 एम्बर 300 के डैमेज? किधर गया वो वीडियो? ऐसे तो भाई नंबर 1 कोई भी कैरेक्टर है। हाँ कोई भी कैरेक्टर, सो यू शुडंट से कि ये कैरेक्टर गू है। नहीं मतलब एलिमेंटल रिएक्शन की तरफ से मैंने बोला था, कॉज देख इलेक्ट्रो बहुत सारे एलिमेंट के अगेंस्ट में वीक है, डेंड्रो के अगेंस्ट में वीक है, विंड के अगेंस्ट वीक है, बट मैं बोला ना अगेंस्ट में वीक है, फायर और वाटर के अगेंस्ट में अच्छा चलता है वो इलेक्ट्रो। फायर मैं बोल रहा फायर वाटर एंड क्या फायर के अगेंस्ट में भी उतना अच्छा नहीं है जितना वाटर और आइस के अगेंस्ट अच्छा है। नहीं मैं बोल रहा वाटर एंड आइस से अच्छा है बहुत। फायर में लाइक एक शॉट कर सकता है, नहीं फायर उतना अच्छा मैं बोल रहा। देख तू सोच ले, मैं बेनेट का अल्टी मारा एंड मैं उसके बाद कैचिंग का अल्टी मारा, तो ओवरपावर्ड एक हिट लगता है, सब हिट नहीं लगता। जो जिंक्यू देख, मैं जिंक्यू का वाटर मैं अल्टी भी नहीं, उसका वाटर स्लैश को वो स्वॉर्ड किया, हाँ वो स्वॉर्ड आ जाता है जो उसमें वेट स्टेटस आता है। तो तेरा कौन सा कितना से कॉन्स्टलेशन जिंक्यू का? C1। मेरा भी C1 है। C1 पे वो एक और थर्ड बढ़ जाता है, वो बड़ा मस्त है। I can do C2 but I don't want to buy. Even I can also do C1 Ningguang but I don't want to buy. I am body. Okay, I got a news for you, Freezy.
हम लोग को एक फ्री का कोड मिला जिससे हमें 10,000 प्राइमो जेम्स मिल गया और हम लोगों पे अभी एक और P6 5 स्टार कैरेक्टर है। Okay, I didn't plan this. Someone needs मेरे को बोल रहा assistance. था क्या? हाँ अभी हम पे दो C6 कैरेक्टर है। I was going to say that तो मैं Rect is क्या going करूं? to be the #1 Amber main Okay. because ओ हाँ बाय द वे फ्रिजी मैं बोलना भूल गया C6 जंगली C0 होता से बेटर है। तो मैं क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? छोड़ दे कहना मेरे क्या को क्या चाहते हो? अबे तोर C5 আছে না এইজন্য বলে বললো एक और तेरे को कॉन्स्टिलेशन चाहिए तेरा बहुत ओपी बन जाएगा फिर তো চংgyun তো আমার भाई চংgyun मेरे C4 को चोंgyun चाहिए। আমার एक भी চং कॉन्स्टिलेशन नहीं। Frizzy want to change accounts I got C4 চংgyun अबे আমি স্মার্ট অ্যাকাউন্টে উইশ করলাম ওইখানে ওই জ্যাংলিং পেলাম। फ्रिजी ये देख फ्रिजी मेक आउट टैक्टिक्स। इधर पे मैं तेरे को टैक्टिक्स दिखाऊंगा जिससे जियो मॉन्स्टर की गन मारी जाती है। What? মানে আমার লাগ এত বাজে শালা আমার স্মার্ট অ্যাকাউন্টে জ্যাংলিং পেলাম। তাও এটা বিগিনার্স মিশন। Steady as stone. क्या टैक्टिक दिखा रहा है ये टैक्टिक तो 2 साल पहले हम लोग किए थे मालूम है तोर वेंटी रिजल्ट वाज व्हाट द फक Rise. Rain outlines your fate. if you don't do this in half HP नर्फ कर दिया बाय द वे। क्या वेंटी का अल्टरनेट होगा? पता नहीं वो स्पेकुलेशन हो रहा है वेंटी को नर्फ करेगा क्योंकि उसका Venti fanboy is going to cry Rain outlines your fate. नर्फ नहीं किया था क्योंकि वो वेंटी रेयर कैरेक्टर है सब लोगों के पास नहीं था। पे टू विन बना रहा था जो कि इस गेम को बहुत अच्छा क्या बोलते हैं सब्सटेंस मिक्सर है जिसको बोलते हैं लिटरली यूटिलिटी यस you can mix anything you can also mix your balls also your D also your P everybody's mixing everything never mind Leave it up. don't mind Scorpion he's just a little bit honey okay honey just for street yes but I'll catch up. what the why are you saying like that I'm not being funny for stream नहीं did I say anything honey बोला okay Leave it to me. Know my soul. Life goes on. Forward. देख तेरा टीम कॉम्बिनेशन में जावा जीची छोड़ के किसी का उतना हालत अच्छा नहीं है बोल के ना नहीं इसका अच्छा है इससे मैं फ्रोज कर देता हूँ इसका ये मारता हूँ जो मैं चारों तरफ घूमता रहता है जियो कैसे Lament. अरे जियो की तो बात ही नहीं भाई इसमें तो कुछ नहीं कर सकता तेरा जो बोस एक्टर है वो पहले बता नहीं बट इधर निगा गया आई मीन निंगवांग है Life goes on. इसका वीडियो भाई वो तो मेरे पे भी उसमें व्हाट डू मीन वो कैरेक्टर का काम निगा गया C4 Beautiful made wood. व्हाट C4 नहीं हुआ yes नहीं this can't be happening how when did you get Ningguang C4 जब निंगवांग था उसमें अरे ये आगे बैनर ও নিংগুয়াং পেয়ে গেছিল অনেকগুলো ওকে इसको तो 2 निंगवांग एक स्पीड में मिला তো ভালো তো নিংগুয়াং খারাপ কোথায় ओ हाँ बाय द वे ओ जो मैं बोलना भूल गया मेरा निंगवांग C1 है और मेरा C2 मेरा साला बारबरा मिला है वो पिछले सीन में ओ हाँ मेरे को भी मिला था मेरा C3 बार बार आया प्लीज डोंट टॉक अबाउट हर
আমার Now I C4 wanna এসব ascend. কি সব ফ্রি ক্যারেক্টার আমার C3 C4 C5 আমার জিনিয়ানি একমাত্র C4 দাঁড়া ओके मेरे को ग्रेज लिली चाहिए। चलो थोड़ा गेज लिली लेके आते हैं। तेरे को ल्यूवे जाना पड़ेगा और एक लोकेशन है आई विल नॉट गोइंग टू से बिकॉज आई आल्सो नीड ग्लेज लिली एंड आल्सो आई एम सॉरी मैंने चुराया था ग्लेज लिली पहले क्यों तेरे मैप भाई? से रैंडम्स को ज्वाइन करके चुराना यार, क्या दिक्कत है? रैंडम क्या भाई, मैंने रेक्ट का पूरा चुराया, पूरा स्टॉक खाली किया, देन तेरा कर रहा था। हेलो क्या? कुछ नहीं आई डिड से एनीथिंग, डिड आई से एनीथिंग? क्या? कुछ नहीं। अच्छा गेंशिन की बात, ओके। यस चुरा ले चुरा ले। डोंट वरी, इट वाज नॉट कोर लैपिस। आई डोंट गिव अ फक। देन अकाउंट दे एंड दे। फ्रीजी सामान से नहीं सारा फ्रीजी चुरा दूंगा कोई लैपटॉप। फ्रीजी বলো সেকেন্ড অ্যাকাউন্টের কি অবস্থা? এখন এয়ার 13 এয়ার 14 হবে, তারপর এয়ার 16 হলে তো আমরা শুরু করতে পারবো। यस 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 आई एम वेटिंग फॉर इट। ओ हाँ मैंने तेरे को बोला था ना मेरे को दे देने में कर আরে देते এত हैं সুন্দর টিম কম করেছি না, দেখো টিম কম কি টিম কম দেখা কি কিচ্ছু পাচ্ছি না, আমি লিটারালি কিচ্ছু পাচ্ছি না। এটা পেলাম জ্যাংলিং বিরু, আরে নিংওয়াং সাইডে রেখেছি, পরে আনবি নোয়েল। अबे শুয়োর তুই তো ট্রাভেলার কে লেভেল আপ করবি, আমি ভুলে গেছিলাম। আমি ট্রাভেলার এই অ্যাকাউন্টে আমার ট্রাভেলার মেন হবে। ट्रैवलर मेन बिग ब्रेन। यस Do you know Traveler is the best 5 star out of every 5 star because यस আর প্রোটোটাইপ র্যান্ক কোড পেয়ে গেছি পাকো। यस পেয়ে গেছিস এমনিও তো ও হ্যাঁ এটা পেয়ে যাস। হ্যাঁ পাক সবাই পায়। আমি জাস্ট রিটার্ন করছিলাম কালকে রাতে। ওকে আর স্টর্ম টেরে ওইখানে ওই কাটসিনটা আছে না, ওইটা তিনবার ক্র্যাশ করলো আমার সানাকের মতো। नाइस। 3 बार क्रैश किया, 3 बार डिस्ट्रैक्ट करना पड़ा। मेरा ही क्रैश नहीं हुआ भाई, तुम लोगों का कैसे क्रैश होता है? पता नहीं ओ भाई ওইটারই টাইম ওয়েস্ট হলো আমার সবচেয়ে বেশি। আর ওই S16 হয়ে maybe I'm playing my game in SSD if that's a factor. ना भाई SSD से बस लोडिंग टाइम कम SSD আমারও আছে। I don't put all the games on SSD but some of them yes. अरे हाँ उससे सिर्फ तेरा वो लोडिंग टाइम कम होता है। I know that then मेरा क्यों नहीं क्रैश करता? I got a fucking AMD GPU, वो भी আমার মেইন গেমগুলো SSD তে আছে, ওটা প্রবলেম। then crash করেगा না। নো আইডিয়া, এরকম অনেকজনই মানে বলেছিল, মানে অনেকজন রিপোর্ট করেছিল এটা, কিন্তু এখনো ফিক্সড হয়নি। मिहोयो मेरे को भाई 3 बार वो वाला कट सीन देखना पड़ा, वो भी नहीं कर सकते इसके। सेम मैंने बहुत सारा ग्रेस ले लिया। ও হ্যাঁ विश করব এটার পরে। ओ हाँ स्क्रीन शेयर देके विश कर। अभी नहीं अभी नहीं। कब करेगा? I'm pretty sure he will get C6 Yang Link now. ये दे दी बक दो, अब करेगा ही नहीं फ्रीज स्पिन। अबे ना एटा तो लीवे में कहाँ मिलता है स्कॉर्पियन? अबे लीवे पे वो मेन जगह पे तेरा वो जहाँ पे तेरे को वो नहीं आर्मर नहीं, हार्बर हाँ लीवे हार्बर नहीं, जो मिडिल पे रास्ता है, वो जिस रास्ते के साइड में झीलें वगैरह है, आई मीन पॉन्ड वगैरह है, झील क्या बोलते हैं? हाँ यस वो पॉन्ड के पास ही है, उसपे वो भी उठा मैंने उठा लिया था। आई एम सॉरी। अबे ये भाई ये कुछ और बोल रहा है फ्रिज जी। सिल्क फ्लावर भी मैंने उठा लिया था, सो आई एम प्रीटी सॉरी। वहाँ पे सिल्क फ्लावर भी मिलता है। ड्रॉप अबे सुअर ड्रॉप कर, वहाँ पे है। अबे तू कहाँ जा रहा है तू चुकी?
डाल दे अपना बुबू फार्मेसी। बाबू फार्मेसी, बाबू बाबू सोना फार्मेसी। তুই স্পিন কর, এখানে ফার্মেসি পাবি না তুই জাংলিং। ফার্মেসি হ্যাঁ জানি, করবো। फार्मेसी फार्मेसी। ये अपने साइड अकाउंट के बोल रहे स्पिन करेगा तो वो ठीक है, उसमें मिलेगा या ना या नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है। अगर सोच ले साइड अकाउंट में किसी को डीलक मिल गया, देन व्हाट विल हैपन? मेन अकाउंट बन जाएगा साइड अकाउंट और क्या। What the fuck? आर यू श्योर अबाउट दैट सन? अगर तेरे को डीलक मिला फिर साइड अकाउंट में तू मेन अकाउंट बना लेगा আমি ना। এই অ্যাকাউন্টে যদি দুটো চঙ্গিট পাই আমি ছেড়ে দিচ্ছি গেম। আরে ও আচ্ছা। चोंग्युन is very ভাই compatible, ভাই একটু শর্ট না, থ্যাংক ইউ। very compatible. Like मैं बोलूंगा the most complicated character to make is Mona and Chongyun is the most compatible character to make क्योंकि उसके साथ कोई भी आर्टिफैक्ट चलता है सब। আরে চংইউন ইউটিলিটি আর ডিপিএস দুটোই খেলতে পারে, यस ওটাই মেইন রিজন। यस फिक्स्ड नहीं है वो, इसलिए Chongyun is very तारतागलिया good to build। और तारतागलिया is 5 स्टार। ओके मैं सस्ता लोगों के लिए बोल रहा था, तू साला तारतागलिया कभी भी भाई अपना बो को এনা स्पीयर বলে डैगर একে बना আমি सकता है। একে আমি বারবার জিজ্ঞেস করবি যে সেকেন্ড টিমের কি অবস্থা আছে, হ্যাঁ ও বলে হ্যাঁ সেকেন্ড টিমে বেনেট রাখবো এই রাখবো, আমি বলছি তোর কাছে বেনেট নেই না, না পরে থাকবে তো। हाँ तो मेरे पे भाई 4000 प्राइमो जेम से मैं डीलक बैनर पे स्पिन करूंगा। ओ भाई I still can't win वॉइस ever चेंजर यूज कर रहे हो ना? नहीं ब्रो मैं कुछ वॉइस चेंजर नहीं यूज कर रहा। नहीं ये सीक्रेटली एक लड़की है, सो अबे वी आर वेरी सॉरी टू से। ये सब क्या है भाई? मैं खेल ही नहीं रहा ये गेम, मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई। अबे तेरे को वैलोरेंट पे सब लोग लड़की बुलाते हैं, ये गेम में मैं तो ऐसे ही बोला। एक तो भाई मेहनत से मैंने 4000 प्राइमो जेम्स जमाए हैं। फ्रीजी তুই কি দেখছিস? हिस्ट्री देखता हूँ ना। কি দেখছিস তুই বিডু? अबे तुम लोग हिंदी बोलो भाई। 4 5 6 7 8 9 10 ओके जाओ। भाई जिगल जी ये रेक्ट आउट ऑफ नोवेयर जिगल जिगल। रुक जा मेरे को देखने दे मेरे इस परमानेंट विश मैंने कितने सारे किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 60 परमानेंट विश भी हो गए मेरे स्कॉट पे। ओ रेक्ट आई फॉरगॉट टू से अच्छा हाँ रेक्ट का अकाउंट में मैंने एक विश किया था और एक विश में मुझे बहुत ही फालतू 4 स्टार मिला, कैरेक्टर भी नहीं मिला। फेलोनियस लैंड नहीं एक बुक मिला। हाँ तो कब से स्ट्रीम का देखो। अबे चुप, मैं इसे बताता हूँ मैंने कब से स्ट्रीम करना। जब से ये पैदा हुआ था। बहुत पुरानी बात है। आई नो मैं तब पबजी मोबाइल खेलता था, कोई कुछ नहीं बोलेगा उस बारे में, मैंने छोड़ दिया 3 साल। मैंने बोला जब से पैदा हुआ है। हाँ तो 1 साल या 2 साल, हाँ 2 साल या 3 साल हो गए तब मैं पबजी मोबाइल खेलता था। मैं तब से स्ट्रीम कर रहा हूँ। मैंने टाइम कंजम्पशन कम कर दिया है। डेली स्ट्रीम नहीं करता। अभी मैं डेली खेलता है। हाँ और वैलोरेंट जब मैं खेलता तब मैं स्ट्रीम करता हूँ। ये गेंशिन इम्पैक्ट रोज नहीं करता मैं, बट गेंशिन इम्पैक्ट में मजा आता है। बू फार्मेसी इसके ऊपर कुछ मिलेगा क्या मेरे को? वाह भाई लग्जूरियस चेस्ट है इसके ऊपर, मैं ऐसे आ गया। हाँ तेरे को पता नहीं था? नहीं। ओके ओके रोज क्या करो गेंशिन नाइट स्ट्रीम। हाँ बट
बात वही है ना कि मैं जब गेंशिन खेलता हूँ अभी तो ऑब्जेक्टिव सारे कम हो चुके हैं। जब मेरे स्टोरी क्वेस्ट रहते हैं मैं तभी स्ट्रीम करता हूँ, कुछ है ही नहीं तो क्या स्ट्रीम करूँ मैं। अभी इतने सारे स्टोरी क्वेस्ट मिलेगा और मैं अभी अभी और एक 40 आर्कॉन हुआ हूँ क्वेस्ट यार। आएगा अभी। हाँ तो अभी और जब कंटेंट आएगा तभी स्ट्रीम करूंगा, क्या स्ट्रीम करूँ वरना। अभी भी तेरे पे बहुत सारा स्टोरी क्वेस्ट है, अभी भी तूने हाँ खत्म हाँ, नहीं इसीलिए तो आज करना है मेरे को वो स्टोरी क्वेस्ट रात को। अभी तो मैं निंगवांग के लेवल अप के लिए काम कर रहा हूँ, एसेंट के लिए। ओके व्हाट आई एम बर्मन। हाँ नो यू आर तुमने नॉट कुछ बोला बैटमैन। था कुछ रास्ते पे पड़ा रहेगा। क्या? व्हाट? बहुत दिनों बहुत ओ बहुत बाय द वे बिंदों डियोना पे के कभी स्ट्रिंगलेस मत हो रखना। चुके हैं स्टोरी उस पे क्वेस्ट, फेवोनियस वॉरबो फिर भी रखना। करते हैं वो, एंड व्यूअर्स भी आते हैं तेरे जितने ही सब है उसका। कौन किसके साथ करता है? बहुत बिंदु, अरे भाई कौन किसके साथ क्या करता है नहीं, उसने बोला बहुत बिंदु करके एक यूट्यूबर है, उसके भी स्टोरी हो चुके हैं। अच्छा वो बोलना चाहिए था। इवन एक यूट्यूबर है जो इंडियन है, वो डीलुक मेन, he's like AR 49 or something, and he fucking slaps with his D-look. আমারও স্ট্রিম করা উচিত। You don't have to stream though, Priti. नहीं Sanak is just showing his alpha male move right there. What the fuck? Alpha male, are you sure about that? I forgot alpha female, correction, I'm sorry. अबे अब ठीक है। किधर भाई लिली? बहुत कम है, only 30 of glaze lilies in the whole map, 31. मैप खोल। ओके तो मेरे को टैक्टिक्स करना पड़ेगा। उसलिए तो मैं तुम लोगों का मैप में छोड़ाता हूँ क्योंकि there's only 31. Even silk flower भी there's like more or less 30. कोर लैपिस like मैं बोलूंगा कोर लैपिस easier to get क्योंकि उसमें एटलीस्ट 103 है कोर लैपिस मैप में। আর বাই দ্য ওয়ে রোজারিয়া কি দেখলে? আমি দেখলাম রোজারিয়া ভালো, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ভালো করেছে। ভালো 4 স্টার। ও হলো একটা অ্যাম্পলিফাইড চংইউন হয়ে গেছে। Show your Xiao build, bro. My Xiao build is shit because I didn't know much about artifacts. আর প্যাসিভটা And দেখে मैंने जब किए नाइट टाइम में एनिमो वाला स्पीड बेशी থাকে। एनिमो वाला और ग्लैडिएटर वाला जब मैंने डोमेन किया मेरे को क्या आर्टिफैक्ट मिला है मैं दिखाता हूँ। किधर है आर्टिफैक्ट, किधर होते हैं ऐसे बकवास चीजें मिले हैं ना, मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा ठीक है, इसमें भी अभी तो एचपी शुरुआत डिफेंस। है, अभी शुरुआत है। अभी अभी दिखाता हूँ, मैं सारे दिखाता हूँ टट्टी टट्टी चीजें। ये तो मैंने बहुत पहले दे रखा था क्रेडिट इसको एक्चुअली। ओके टट्टी, कतई टट्टी, महान टट्टी আমার और भी জানিস टट्टी। আমার বেনেট পুরো বিল্ড ये হয়ে গেছে इसका कुछ এখন, बोलना ही আমাকে नहीं আর मुझे, কোনো আর্টিফ্যাক্ট দিতে হবে না। ওকে इसका भी नहीं बोलना मैं, इसका भी नहीं बोलना, इसका भी नहीं আমার बोलना, इसका বেনেটে भी नहीं बोलना। 5 स्टार পুরো। बस बाकी सारा गू देख लो, यही गू मिला है मुझे। Your AR is 41, just chill। अरे ब्रो क्या बोलूं मैं, मेरे मेहनत के रीजन सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं मिला। टट्टी मिला मेरे को, एक बार मिला वो एनिमो वाला, क्या कहते हैं जो भी होता है वो एनिमो वाला आर्टिफैक्ट, उसका मैं नाम भूल गया। बहुत बार करने के बाद मिला, उसमें क्या निकला एचपी, मेन स्टैट ही एचपी है उसका, क्या बोलूं। तो मैं हम क्या कर रहे हो भाई, यही तो रॉन्ग शुरुआत वेपन और है। जियाओ, मेरे पे कुछ है ही नहीं ना वेपन, और because I'm free to play, I just have the blessing of the moon pass। नहीं फ्री टू प्ले मत बोल, बोल कि how can you be free to play if you did the primogems thing, you know? ब्लेसिंग ऑफ द विल्किन हाँ मून। तो मैंने बोला तो आई एम फ्री टू प्ले, जस्ट ब्लेसिंग ऑफ द मून है, मतलब नहीं स्मॉल बोल I am a स्मॉल light स्पेंडर, spender, I am a light spender। नहीं स्मॉल स्मॉल पीपी, आई मीन स्मॉल स्पेंडर साउंड्स गुड। Small spender sounds small PP। I kind of Don't do think that you artifact don't have farming PP। Why are you now, talking wait about till your PP? That's gay। AR45।
हाँ मतलब मेरे को मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था लक कि मेरे को मिलेगा कि नहीं, और मेरे को जो मिल गया ना, अब मैं कभी डोमेन करूंगा ही नहीं जिंदगी में। मत कर। हो गया मैंने मेरा ट्राई आपका किया and क्राफ्टिंग my टेबल। noblesse oblige 4 piece is very good. One has got energy recharge, elemental mastery, attack and crit rate. और एक पे attack as main stat crit rate. I know defense है but हाँ मेरे को ब्लैक benefit क्लिफ स्पीयर attack चाहिए, elemental बट मेरे पे mastery. मास्टर लिस्ट और एक है एनर्जी रिचार्ज वाला शॉप नोबलेस पे पॉकेट ब्लैक जिसपे क्लिफ। एलिमेंटल मास्टरी अटैक एंड मोर अबे चुप रहे। क्या बोलते यस नो आई एम सेइंग दिस ये उस अच्छा उसके है, बट वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, ये चीज उसको वो एक नहीं है मेरे क्रिट डैमेज मेन स्टैट वाला मिला है विद एलिमेंटल मास्टरी एंड एनर्जी रिचार्ज एंड अटैक एंड ये बेनेट को अभी गॉड बना दिया। को। अरे ठीक है ना भाई, चुप रहे। एक्सेप्ट मैं सब +0 पे सो आई डिडंट अपग्रेड सो दैट्स गुड so technically he's still not वर्डिसेंट god. डोमेन गिव्स गुड। हाँ वही वही वाला कर रहा था आई गेस, आई थिंक। हाँ वर्डिसेंट वाला ही कर रहा था भाई, मैं किया तेरे साथ। व्हाट यू मीन आई थिंक आई गेस? मेरे को याद नहीं है ना भाई, मेरे को क्या करना था मैं भूल गया, मैं इधर क्यों आया। अबे मैं फोर्ज में क्यों आया, मेरे को फोर्ज में क्राफ्ट नहीं करना था। मैं तो लोअर द वही कर वॉल्यूम रहा ऑफ हूँ योर मैं तो फ्रेंड। हाँ वो मैं तो मैंने तीन ही कर रहा हूँ। एक है जियो कर जस्ट पे दिया वो कर दिया। आर्केक पेट्राइट है, एक ये फोन पे नोबलेस था तो इसका ऑब्लाइज। बहुत कम आवाज आ रहा था, तब बढ़ाया था मैंने। किसका? मेरा? तेरा। Why did you butterfly my आवाज? I was not even talking. हाँ, 10 हाहा मिनट में आया, बीच गुड में तो नाइट। बात कर। ये हिला के आ रहा है। किधर है मेरा रेड का भी आवाज कम करने के बाद बटरफ्लाई क्लिकिंग। और किधर है, किधर क्या वो चीज ये रहा। क्या क्या बनाना पड़ता है इसके लिए अब। वेट टिल यार 45 या आई विल वेट, बट द क्वेश्चन इज, जब मेरा Pretty स्टोरी hard to क्वेस्ट get खत्म to हो 45. जाएगा तब मैं क्या करूंगा लेवल अप करने के लिए, तब डोमेन भी तो करना पड़ेगा लेवल अप करने के लिए। डोमेन या ले लाइन करने पड़ेंगे मेरे को। ले लाइन नहीं, उनको कुछ तो बोलते, ब्लॉसम हाँ ब्लॉसम पता नहीं। लेलाइन हाँ ब्लॉसम ले ही लाइन। बोलते। एक लेलाइन ब्लॉसम ऑफ चेक वेल्थ, इफ यू एक लेलाइन ब्लॉसम ऑफ कैन क्राफ्ट नॉलेज। प्रोटोटाइप स्टार्च लेटर फॉर 3 आवर। नहीं मेरे पे वो नहीं है, वो स्पीयर वाला वो चीज नहीं है जो भी होता है वो। बाय द वे वो तेरे को मिल जाता है इफ यू डू स्टॉर्म टेरर एंड वुल्फ। हाँ बट मिला नहीं ना। और चाइल्ड मेरे पे 3 स्पीयर का वो पड़े है पीस। मेरे यहाँ पे स्पीयर कैरेक्टर ओनली यांगलिंग है and यहाँ पे मेरे बैग में 3 स्पीयर्स है। एक ड्रैगन्स बेन, एक प्रोटोटाइप स्टार ग्लिटर, एक क्रेसेंट पाइक। भाई कितना लगता है इनको लेवल अप करने में। जो बंदा तेरे को पूछ रहा है लाइक ही इज व्हाट AR 45 अबव कितना है? मुझे क्या पता भाई। तो पूछ लेना। तू खुद भी तो पूछ सकता है, तेरा आवाज भी जा रहा है। यस कितना यार है आपका। ओके अभी नेक्स्ट भाई ये टट्टी चीज फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा 100-200। चलो निंगवांग को क्या दिया जाए, लेट्स सी। आर्केक पेट्रा। ओह यू हैव आर्केक पेट्रा राइट? तेरे को कल मिला था तो। क्या? अरे वो अरे एक डोमेन किया ना, मैं तू फ्रिजी हाँ यहाँ वो पे हम एक तीनों मिला कोई था मेरे को सिर्फ इधर। और कोई पर्पल नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, अरे फिर से करना पड़ेगा ये वाला डोमेन। भाई दैट इज बैड। AR-45 वो AR-45 है। हाँ बट मेरा ये हो गया कि ये वाला आई थिंक हमारे से ओनली फ्रीजी एक बंदा है जो 46 पे है and उसके पास बहुत गू चीज है। हाँ वो टट्टी बंदा है, ठीक है, वो AR-46 है बट नो बट बॉट है, कति बॉट। हाँ उस पे अच्छा आर्टिफैक्ट भी नहीं है मेरे and को यहाँ पे यार इसके पास 4 वेंटी स्टार है। आर्टिफैक्ट को लेवल 16 करना है, करना तो पड़ेगा अब। कल मेरे को ये चाहिए ये।
कौन सा 4 स्टार आर्टिफैक्ट कर रहा है? जब मिलेगा तब करूंगा, अभी तो सब सेट। वो तेरे को मिला नहीं है वो? 45 नहीं 54। अच्छा 54 मैंने देखा नहीं। सॉरी सर। मैंने देखा ही नहीं। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? कैचिंग के लिए कौन सा वेपन अच्छा है if I am F2P? Yes, this guy got catching and he doesn't know what to use. No, I know my stuff. Only thing it's very complicated. Catching is very complicated. क्योंकि I want to take the battle pass and I am thinking about the Black Cliff sword, but I have a prototype rank or refinement 2 जिसको मैं refinement 3 भी कर सकता हूँ level 80 वाला, but I have to like level up the whole thing again. I don't want to. Like there's 3 options in my hand now. Physical build or electro build on catching? I'm doing electro. Physical build उतना अच्छा नहीं है, as far as I know. Rancor for physical build. हाँ, Rancor I know physical. But if I like, I don't have any options. यहाँ पे एक Black Cliff longsword है जो एक option है, but I don't have Star Glitter. And और एक option है जो Battle Pass का जो वो sword है. Life goes on. Lion's roar or flute on catching for build. Electro. अच्छा, flute है मेरे पे then. I have a flute, very good flute. और मैंने Zinkyu को दे के रखा है. देखो भाई, नेक्स्ट कैरेक्टर बैनर में स्पिन करना है। आई मीन नेक्स्ट कैरेक्टर बैनर नहीं, जब कोई अच्छा कैरेक्टर बैनर आएगा लाइक डिलो क्या गन न्यू, उसके बाद पता नहीं वेपन कहाँ से लाऊंगा मैं। उसके बाद शायद मेरे को वेपन बैनर में स्पिन करना पड़ेगा जब मेरे को कैरेक्टर्स मिल जाएंगे मेरी टीम के लिए। ब्लैक स्वॉर्ड इज द बेस्ट इन स्लॉट ऑफ 4 स्टार फॉर इलेक्ट्रोकेशन। फिशिंग के लिए ब्लैक स्वॉर्ड। ब्लैक स्वॉर्ड कौन सा है? बैटल पास वाला? जो बैटल पास वाला, हाँ। That's वही मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ। But there's like एक बंदा ने statistics दिखाया because he's a electro catching main and that guy showed कि like नोएल क्या कर रहा है टीम में? वेट, ब्लैक स्वॉर्ड से like बेटर मैंने देखा ब्लैक क्लिफ लॉन्ग ओ हाँ बाय द वे, आपको पता है मेरे पे एक 5 स्टार कॉन्स्टलेशन 6 वाला कैरेक्टर है, 5 स्टार, और मैं फ्री टू प्ले। I think he knows the joke already. No. I mean yes, but no. Even if you know, pretend just you don't know. MC right? What? क्या बोला तेरे को? MC बोला? नहीं, वो पूछ रहा है MC right. देखो पूछ रहा है, शायद से कोई यूट्यूबर का नाम आएगा, मुझे नहीं पता। MC का और एक फुल फॉर्म होता है तो बट सब तेरी तरह थोड़ी है। हो ही सकते हैं क्योंकि I think he knows the joke. Main character is 5 star. Oh. Yes. Yes. एक AR-54 का बंदा है, Rizzy. Take some knowledge. Yes, take some knowledge. तो कैसे AR-46 है मेरे को नहीं पता, but take some knowledge. क्या हुआ? AR-54 का एक प्लेयर आया है। हाँ तो तेरे को पूछना है तो पूछ, नहीं पूछना तो बाहर में जा। मैं क्या पूछूं भाई? नहीं ये पूछ कि why like you want Chongyun constellations but why are you getting Yangling constellations? My main character is 10 star. वाह मोदी जी वाह। अरे क्या भाई? एनिमो एंड जियो दोनों है। वाह वाह भाई वाह। हाँ वो तो मेरा भी है।
By the way, my main character is ओके मैं 5 well मिनट आई मीन 2 मिनट में आया, ठीक है स्कॉर्पियन, मेरा वर्ल्ड ज्वाइन करके लूटियो एंड यू कैसे ज्वाइन टेक करूं केयर ऑफ जब द चैट, आई विल बी राइट बैक इन 2 मिनट। ओके नहीं नहीं अभी अभी तो ओके तो सो ये बंदा थोड़ा भाई मैं पागल है। चीची चेंज करके जाता हूँ, मेरा स्ट्रीम ना डिलीट हो। ये एनिमल 10 स्टार्स स्कॉर्पियन उसका दुनिया लूट। कैसे लूटूं भाई? मैं उसको अगर रिक्वेस्ट ज्वाइन भी करूंगा देन हाउ कैन आई डू इट? और मैंने पहले भी लूट लिया, सो हाउ विल ही गेट नाउ? So dark. I got what I need. Uh, I got my what did I get? I forgot. Violet grass चुरा के ले आया था मैंने बहुत सारा। मेरे बेनेट एंड सुक्रोज के लिए मैंने बहुत सारा वो लिया था, विंड व्हीलास्टर। मैंने बहुत सारा सिल्क फ्लावर लिए थे, इवन काला ले लिया था। मैंने आई थिंक मैंने दो चीज नहीं नहीं एक चीज नहीं लिया, वो है ग्लेज लिली, क्योंकि मैं तो निंगवांग बिल्ड नहीं कर रहा था। बट यस 10 स्टार कैरेक्टर C12 कॉन्स्टेलेशन लॉल। ভাই কি হলো আমি ভাই সিচুয়েশনটা এখনো বুঝলাম না বটকে। you didn't get the joke, Frizzy. You No. so dumb. Why are you so dumb? Because I want to be dumb. No, you are just dumb. You're just saying that. What the okay. 10 star because 5 star plus 5 star Animo and Geo Traveler. Reduced to just standing around. And 12 How constellations. Figure it out. বুঝলাম। But actually কিছু বুঝলাম না, but বুঝলাম। अरे मत छार। No, 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 no. You तेरे को नहीं समझना है, मत समझ। I how do I care? Okay, I forgot to say one thing. So here our streamer guy who's now AFK, he is a Zhao simp because The whenever damned I will talk sooner die something about again my than lay a characters, hand he's on like, me. you know, nobody's like my Zhao. Your catching is bad. Your Mona is bad. Your Shinki is bad. Your Sukro is so Zhao इतना Zhao को simp करता है, kind of thing that he also has a picture in his mobile जो वो रात पे वो घुसा के रखता है for doing his private stuff. How the fuck do you know? जाओ प्लस बेनेट, ऐसे करो भाई को बोलो अल्टीमेट जल्दी आएगा। जाओ को इसको बेनेट नहीं है ना, इसका मेरे पे बेनेट है। मेरा टीम मेरा लाइक स्पाइरल अबिस खेलने के लिए 8 टीम बंदा सबसे का weird है, मैं बता रहा हूँ। और रेक्ट का टीम का तो छोड़ो, I उसका am back, कोई but टीम wait, काउंट नहीं one कर more रहा हूँ नहीं मैं। है। रेक का काउंट नहीं कर रहा हूँ, रेक इतना खेलता ही नहीं है। हाँ? ये Memories. रेक्ट का टीम नहीं है वैसा, उसका फिशल एंड बेनेट ही अच्छा है एंड सब लोग लाइक आई मीन है कैरेक्टर कोई, बट कोई लेवल अप नहीं है। हाँ, अरे वो तो অনেক খেলে না, ওটা यस রেকটা বানা যায়। हाँ वो तो यार ओके आ गया मैं। 28 है ना, हाँ, 27 है, समथिंग लाइक दैट। जियाओ प्लस बेनेट यूज करो, भाई को बोलो अल्टीमेट मैंने जल्दी आएगा। आंसर दे दिया, मैंने आंसर दे ओह दिया। तूने बोल दिया, ओके नाइस। मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया। क्या आंसर दिया भाई? कुछ नहीं तू खेल ना। कुछ नहीं ओके you're good bro, you're good। ये फ्रीजी तरफ ओके तो पागल हो गया मैं था। कुछ पूछना चाहूंगा, इज दिस नॉर्मल? नहीं नहीं मेरे को पूछना है, इज What is दिस normal? नॉर्मल? तो मैं मेरे साथ आंसर ही क्या बोल हुआ दिया, था नहीं। उस दिन, अबे चुप रह तू। हाँ तो उस दिन क्या हुआ था, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, प्राइमोजेम्स ग्राइंड करा मैंने 2 दिन, उसके बाद मैंने स्पिन करा, मेरे को फर्स्ट 10 पुल में चिची मिला, उसके बाद वाले 10 पुल में मेरे को ज्याओ मिला। इज दिस नॉर्मल? क्या मेरे को हमेशा ऐसे ही मिलेगा? तेरे को परमानेंट से चीची मिला ना। नहीं सेम बैनर से। नहीं वो सेम मैंने बैनर 10 पुल किया, मेरे को चिची मिला, सेकंड नेक्स्ट 10 पुल पे मेरे को जियाओ मिला। इज दिस नॉर्मल भाई? मेरे को तो नहीं लगता।
I gave a very good answer for your Zhao and Bennett. Yes. Absolutely normal. Nice. सनक स्ट्रीम चेक करेगा क्या आंसर दिया था ये भाई अब तो मेरे को चेक करना है भाई। किधर है मेरा स्ट्रीम? स्ट्रीम डिस्कॉर्ड पे डेफन ले रहा हूँ वरना डबल आवाज आएगा मुझे। ओके किधर है स्ट्रीम मेरा? ये रहा मेरा स्ट्रीम। ओके किधर है स्ट्रीम मेरा? He is a Zhao simp. Here है। अरे मत छार। No 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 no। ये तेरे को नहीं समझना है मत समझ। How do I care? Okay, I forgot to say one thing. So here our streamer guy who's now AFK, he is a Zhao simp. Because whenever The damned I will talk sooner die something about again my than lay a characters, hand he's on like, me. you know, nobody's like my Xiao. Your catching is bad, your Mona is bad, your Shinki is bad, your Sukro is bad. So Xiao, इतना Xiao को simp करता है का कोनो हिलरिटी है ना कोनो कुछ नहीं बोला मैंने क्या बोला था? बोल रहे हैं नॉर्मल चीची अल्ली पिटी। ओके वन क्वेश्चन, चीची एस टियर है या गू है? I want an answer because he sims Chichi. He also sims Chichi. Yeah, forgot to say. He sims Chichi the most. No. AR54 is pro, no. So I want to listen to pro discussion. Pro discussion. तुम्ही कोण pro? Yes, discussion. I ain't pro. I'm just a spokesman. Yes. It's very interesting, you know. Spokesperson can get into anything. तू टेलीपोर्टर में मार ना अपना पत्थर। अबे साले तू अपना स्टोरी मिशन कर। स्टोरी मिशन तुझे पता है? नहीं तेरा AR40 मैंने करवाया। AR40 करवाने के बाद ये सब स्टोरी मिशन मैंने अनलॉक किया। तो तू कर एक छोड़ के। एल्बेडो का कर। एल्बेडो का सबसे इंटरेस्टिंग है। अबे साले तू तब वो गे लवर के साथ खेल रहा था, मैं क्या करूं? I mean nothing। शांति आया तो एक्सपोज करता बना। मैंने नाम नहीं लिया। whoever that क्योंकि that is true because you showed me। did I say कि मैंने देखा है? यो ये क्या सुन लिया He is a मैंने? very weak 5-star in combat to all 5-star। सबसे yes! weakest 5-star है। Let's go। Now finally he will not sim ट्रैवलर Chichi। भी उससे अच्छा है। तू कुछ नहीं बोल सकता भाई। ये फैक्ट है। No answers। It's a fact now। He is AR54। You टेक्टोन भी बोला। can't say टेक्टोन का shit। वो स्ट्रीम देख तू। You can't say shit right now। चीची सबसे वर्स्ट 5-star है। 2 breathe 3 4 हील कोई काम में नहीं इन गेम में। मैं बोला ना हील बाद में काम में नहीं आता। ये वो उसके लिए बेनेट उसलिए अच्छा है ना क्योंकि स्वर्ल डैमेज भी होगा ना। फायर पायरो। अरे बेनेट का अल्ट AoE है बेसिकली। तो क्या उसमें अल्ट कर सकता है इजीली। यस। और उसका हीलिंग सबसे फास्ट है इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। बट डज हीलिंग हीलिंग क्या रिक्वायर्ड है हाई लेवल पे? चीची डैमेज बाजा होने। That's a question। Yes! See? Bennett is 6-star। I got the perfect Bennett। Let's go। I mean nothing। नहीं, it's not you। I'm asking। It's not you। मैंने तेरे को कब से बोल रहा था चीची गंदा है। छोड़ चीची को छोड़। सिम करना छोड़ भाई। अबे क्या सिम करेगा वो? FBI ओपन अप। ओ भाई कब से बोल रहा था कोई बात ही नहीं सुना मेरा।
बेनेट के साथ बेनेट is not only for healing, no, he's for reactions. He's a fucking reaction. What? Oh, I got C1 Bennett, so I can Idiot talk. about. I got C1 Bennett, so that's okay. कोई नहीं. ₹1 दे चलेगा. ऑर्डर दो. Oh, sure. एक कोरपो. मेरे को बेनेट चाहिए, बेनेट. भाई जिसको जिस ₹10 थोड़ा ज्यादा ही कम नहीं हो गया? अभी सीवी भी जानी ना, मैं काट दिया. अभी पता चला टट्टी है. हाँ वही प्रॉब्लम है जियाओ का. उतना जिया है. उसने तो जियाओ भी इज ओके इश. जियाओ একটাই জব है কাছে ওই একটো বাজে ড্যামেজ খায় अल्टेट Yes, yes, that's a big drawback. अगर वो नहीं होता, then I will say Jia will be like triple S tier. Yes. Really triple S tier. मेरे पे है, but Dragonis Warbo नहीं है तेरे पास? Sword. Oh, मेरे को मिला था. ओ नहीं, मेरे को लेंस मिला था. अरे मेरे को स्ट्रिंगलेस ही नहीं मिल रहा है. तो क्या है? Stringless refinement 3 है. मैं तो भाई दो चीज करता हूँ. फ्रीजी के अकाउंट में चोंग्यून एंड काया लेता हूँ. मेरे अकाउंट में काया ले लेता हूँ मैं ओनली. या अगर कीकी यूज करना चाहते हो तो यूज फिजिकल डैमेज स्वॉर्ड एंड 4 पीस क्रायो आर्टिफैक्ट. जो ड्रैगन स्पाइन वाला डोमेन है वहां पे मिलता है. That's a good domain. That's easy to do also. हाँ करना पड़ेगा. I'm sorry to say, son. तेरे पास चोंग्यून नहीं है? अरे डिस्कॉर्ड स्ट्रीम कर. ओ मेरा स्ट्रीम पे माइक बंद था. मैं तब से बात कर रहा था. मैं बोल रहा था कि काया मेरे को बेडू के साथ मिला. आई मीन बेडू सिंगल स्पिन किया, फिर काया मिला नेक्स्ट सिंगल स्पिन पे. कुछ भी. और थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था भाई मेरे अकाउंट कोई खरीदेगा, ₹10 में बेच रहा हूँ. ओनली ₹10. तो खरीदेगा भाई मेरे अकाउंट में. तू मेरे को बेच सकता है. डू यू नो व्हाई हाउ यू स्टिल ओwe me money? ₹10. हाँ, but you still owe me money. ₹10. You owe me more. You owe me like a 4-digit paisa. Okay, 4-digit, not even 2-digit. Yes, I know the Valorant skin. Yes. ओके तो मेरे को ये करना है, फिर पानी में जाना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. Cool it. फिर से चलो उधर. ये वाला मिशन बहुत अच्छा है. किसका है ये मिशन वैसे? ओ ये जोंगली का मिशन. ओ
Zhongli. Dodge this. एक तो भाई एक बोट वाला था ना जो ले जाता था इस बोट तक, वो किधर मर गया? गुड इंग्लिश मैथ्स क्वेश्चन। अरे जा, जियाओ लेके डैश करके जा। Cool it. Prize. For insurance चीची का एबिलिटी। भाई मेरा जियाओ पागल हो गया। नहीं जाऊँ बोल। He is at Live Harbor. Zhongli से बात कर। जोंगली से बात करने के बाद I'm not going to अच्छा story है। I'm not going to say you. I didn't think I would see you here. एल्बेडो का किया? नहीं। Are these two your friends? नहीं जोंगली पहले कर रहे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्बेडो तो it's kind of a joke but it's with the main story. मेन स्टोरी उधर पे रहता है, हमें को पता है बट मैं भूल गया उसका एक्चुअली एग्जैक्ट Yes, लोकेशन। we had the fortune of meeting not too long ago. Yes. They are quite a knowledgeable and talented pair, and a pleasure to be around. Okay, Traveler, I don't have any missions we were just to do. discussing the history of Rex I need Lapis. books, but I don't Would you like want to books listen? right now. I This, have good sir, mostly seems not done to my appreciate second team the except Ning almighty Wang. power of the Lord of Geo. I mean, Ning As Wang a is like professional level archaeologist, 60 with I level think 50 we are discussing the weapon and whereabouts good of the artifacts. first Mora. The first Decent Mora? artifacts. As everyone knows, I need a the lot Lord of of Geo books. taught the ancient people of I Liyue need a the lot craft of of smelting, XP. अबे चुप भाई, creating तेरा आवाज goods that कम कर allowed ले, them मैं to स्टोरी नहीं develop सुन रहा। trade with the early nations of that time. This is about Today, actually zombie के Liyue बारे में holds ही the बात हो sole रहा है। right to cast Mora in the entire continent of Teyvat. The world's very first Mora should have been cast by the hands of the Lord of Geo himself thousands of years ago. According to my Albedo research, is as well joke. as my own Bruh, you hypothesis, don't know the power of I Albedo. believe that मैंने this अभी तक किया coin ही of नहीं, तो unique मैं historical joke नहीं समझ significance पाया। has been passed down secretly through the years as a kind of token. For example, perhaps the Qixing who control the Liyue use it in some kind of unknown ceremony they hold when they come to power. Oh, no. My research indicates that the first Mora coin is not such a simple thing. Mora is a catalyst. This we all know. Even today, Mora is used in the mystic arts for its curious properties of weapon enhancement. The world's first Mora would no doubt possess the strongest power. My next historical treatise will boldly expound on the newest findings from my intense decade-long research. That is, that the Lord of Geo used this original Mora as a catalyst to enhance a dagger and a sword. हिंदी नहीं बोलोगे मैं डिस्काउंट कर Dagger and a sword? तुम लोग Well, भी buy the book when it comes पागल हो out to read the जाएंगे। full story. तो फिर जी का जीप काट दूंगा For मैं। now, I will only reveal this. The one who finds the dagger shall become supreme in Liyue. And the one who finds the sword may be crowned Liyue's sovereign. I can't say I agree. Next time we will be banned. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first. But Mora and money came about simply because they are a convenient measure of a contract's value. Rex Lapis just meant for Mora to serve as a catalyst for people to exchange and trade. The world's first Mora is probably just an ordinary coin created by Rex Lapis. As for its fate, the same as all Mora, I suspect. It was simply spent somewhere. मेरा weekly XP limit. I think that Mr. Hanshua's hypothesis seems reasonable. Mr. Zhongli's argument, on the other hand, lacks any evidence. How can you so easily dismiss the Lord of Geo's profound foresight? No, I am not debating right or wrong. I am simply stating a fact. Enough! Do you think you understand the Lord of Geo more than me? If I can. I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Well then, answer me this. Long ago, when Liyue Harbor was being constructed, the Lord of Geo taught the people how to build houses.
The model home he used to teach them was completely cast from Mora, correct? That is correct, indeed. Okay, then tell me. Why would the Lord of Geo do something so extravagant if not because of the mystical power that Mora contains? There's a simple explanation, really. To the god of wealth and commerce, what material is easier to get than Mora? Oh. Huh. I mean, I am talking about Rex Lapis. Excuse me, sir. I have some questions about archaeology. Can we find somewhere quiet to chat? I mean, if it's okay with you. Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some help. Of course. They can come if that's what pleases you, sir. Let's go. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. I want to eat Paimon. What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Geo and would draw a lot of angry looks. So it's best to discuss this somewhere quiet. Your argument just now exhibited a cuteness of speech and thought. Most importantly, you don't fall for the boasting and acting of the others. You remain objective. So I have a question for you. Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed were evil? Let's not analyze it in terms of good versus evil. Rex Lapis placed great importance on the integrity of contracts. So any gods he killed certainly must have broken some kind of contract. Right! The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. But when I was doing some research, I learned about the legend of the god of salt. The god of salt, Havria, was a very kind god, but she encountered Morax one day in battle. Morax used a rather underhanded trick to assassinate her. What? No way! This bit of history is a long story. But you may not like the truth when you hear it. Don't worry, please tell me what you know. This event, I've already searched for answers for a long time. No, it's just... Where should I begin? Zhongli के आँखों में आंसू है क्या? क्या दिख रहा है मुझे? Over here, Mr. Zhongli. I've been looking for you. So you're over here all this time. Put down your weapon and stay back. Otherwise, Paimon's reporting you to the Millilith. First of all, I'm not holding a weapon. There's no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from Snezhnaya. I'm not here for trouble. The Fatui say that every time. But this time, I registered with the Liyue Ministry of Civil Affairs. I could show you the official documentation if you want to see it. I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the ministry. I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhang Li, with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wangsheng Funeral Parlor a handsome amount to hire Zhang Li as my own consultant while I'm in town. So you mean to say that this is work for the Wangsheng Funeral Parlor, yes? Well, since it's work, I don't have a choice. A consultant of the Wangsheng Funeral Parlor must respect their duty. Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now, shall we? Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. This experience may be of help to you on your future adventures. It is a story from before the rise of the Seven. Although the god of salt has already perished, it will still be a meaningful experience for your journey. He is a god? Wait, this is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. That is why. But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no one. It will surely be of great help to us. Oh? What talent?
If my friend espies a treasure chest, they will absolutely find a way to open it. Yes, we just click F Good at on that it. too. Yes. Well, that is quite enticing. All right, then. Well, let's go. There's no time to waste. When the Overlord of the Vortex was crushed by the Jade Chamber recently, perhaps something of interest was washed ashore. An ancient artifact would be good. Traces of ancient activity would be great. But a piece of the god's limb would be even better. Who knows what surprises we may find. Matlab that the meaning of the thing is what do you mean by he he? Fenty bola tha he he, and then Paimon ne bola he he. Wanne dayo? Matlab what do you mean by he he? वो कोरियन नहीं जापानीज है ना? नहीं वो कोरियन है. कोरियन? Dayo कोरियन है. Okay. नंदे दायो. हाँ वो कोरियन है. मैंने तेरे को एक वीडियो दिया और एक वीडियो दिया था, so you should check out. That guy is Korean. This place looks so ordinary. And that Can guy we made really Paimon find a anything god. valuable here? So big of a god कि वो Chop, he chop, can. chop, chop, chop. Paimon thinks it looks really grand. I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all, and I don't even know where to begin looking here. Guyan Stone Forest is actually the perfect place to be, if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the Overlord of the Vortex. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, both in number and in size. But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater, and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Guyan Stone Forest. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Indeed. This is where the value lies in research at Guyan Stone Forest. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the Overlord of the Vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. I mean, rich with Very, archaeological very rich, knowledge and historical value, yes? That's all I seek in life. Well, since we brought so many people, I think it would be best to split up and look. I want Okay then, I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it comes to archaeology, I can't compete with the expert here. Huh? Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll escort him then. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. The ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. Because Paimon is your... Paimon is the best guide. Wow. Paimon is or maybe Google Nice. because many people don't use it. Sorry, I was an iPhone user. 5 years.
निहाचू निन्ना चाहिए मेरा फोन गिर गया रे भाई Wheel of life. ओके निन्ने दायो Useless. Cool it. Useless. निन्ने दायो Boring. अबे ये मेरा चैंपियन किया है तेरा पिक्चर देख रहा हूँ दोनों साइड से साउंड आ रहा है जब ये हिट Wheel of life. वियर्ड लग Cool it. कबल निन्ने दायो रोज़ालिया भाई पोकेमॉन का नाम है रोज़ालिया सही बता रहा हूँ रोज़ालिया अच्छा है उसका भी रियाओ जैसा डैश है बट उसका मैं वो चॉम्पियन का मम्मी है हाँ उसका रियाओ जैसा एक डैश है बट वो पीछे से ज्यादा डैमेज करता है आगे से कम डैमेज करता है वो पीछे ही जाता है वो डैश से वो तो रियाओ भी जाता है इसलिए तो बोला रियाओ जैसा डैश है और वो पीछे से ज्यादा डैमेज करता है वो पीछे से ज्यादा डैमेज करता है उसका एक पैसिव है उसको बेसिकली चॉम्पियन किलर बना Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. Fizzy, I'm sorry to say your champion is going to die. Useless. अरे बाल चला है तो पोलैंड का एक क्या नाम है मतलब माता और फिजिक को बैन कर रहा हूँ या तो उसका जीप काट अरे इतने सारे पोलैंड कैरेक्टर हो गए जिया जॉन्गली रोज़ालिया मतलब लेटेस्ट ही कैरेक्टर्स भी पोलैंड कैरेक्टर घंटी का क्या नर्फ होगा वैसे अल्ट का पता नहीं कि कौन सा क्या बोला So sorry. That was. मेरा साया एक हिट में मर गया क्यों मेरा साया 3 में था मैं भूल गया Rain outlines your fate. ये नन्नन दायो Useless. Everybody know I ain't no good no more. Can you walk when all of it's done? Life goes on. Boring. Scorpion, I wanna rob a bank. I wanna rob a bank. Spread the money through the street. Nandandayo. Let me set a party. Que ako baga oh. Don't disappoint me. This is an outro song. Like and subscribe. It will give me watch time. Yeah, this is an outro song. Useless.
टाइम मिलेगा और पैसा आएगा Disappear! Disappear, bro. Disappear. Worthless! Boring! Scorpion. Useless! एक तो इनका पता नहीं इतना बड़ा बड़ा कहाँ से लाते हैं ये चिकन आई मीन मीट नॉट चिकन इसे नन्नता है What do you say, Dron? Ready to stretch your wing? Sublimentrix. How are you, bro? Scorpion! मैं विश कर रहा हूँ चल ऐसे स्कॉर्पियन के लिए विश कर अबे ये किधर का है बे ओशियनिक तो नहीं है इधर Object in the center. Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. The hydromimic monsters. मैं बढ़िया से बता I have a contract हाँ मैं भी मस्त and must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them and recover the relic. अबे मरा नहीं अभी तक वाह भाई अब reinforcement हाँ यही तो बाकी रह गया है Orders received. चलो यही बाकी रह गया अब भाई इनके साथ ही फाइट लड़ूंगा मैं फिलहाल Evil conquering! Worthless! Here! Here! Get out of my way! Here! It's just a stone slab, but अरे its भाग design is quite unique. This should be enough to नंदन garner some information. Let's head back. You call yourself a scholar of archaeology? You can't even recognize this or that. What are you good for? We all have our areas of expertise. I already tried very hard to explain. Oh, stop arguing! What in the world happened? This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. She left me to rely solely on guessing, experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what a waste of time. I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? And you! You kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? Isn't measuring their value in Mora the easiest way? This also matches the traditions of Liyue, does it not? Now, calm down. No need to make a fuss. We were able to bring back some intriguing objects. Let's have a look. इसे
And then Dio Scorpion. Oh, what a shame. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex, but they have nothing to do with the god besides being in the vicinity at the time. The stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Perhaps it will be useful for research purposes. Quick, give it to me. At least we didn't come for nothing. The power of the gods, yes! This is good. Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. So, it's only valuable for research if there are remnants of divine power on it? Not at all. My quest to uncover the history of the God of Salt is because history can tell us about culture and beliefs. But you're just trying to use archaeology to get rich. Nonsense! I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear, if I'm lying, may the Lord of Geo strike me down. Oh, by the way, you probably don't want to sell that teacup. Oh? Why's that? That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the Qixing... Ah, I see. What a shame. It was of such high quality, too. See? You do want to sell these objects! But, so what? Why can't I pursue wealth both intellectual and material? Don't be so simple-minded. All right, then. No need to stay here any longer. I'm rather quite intrigued by the God of Salt, too, actually. Let's go to Saltarai next. नहीं वाह भाई वाह 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 वाह. And what are you? They're still... And what are you? They're still... You're simply a money grubber. And what are you? They're still... And what are? They're still... And what are you? They're still... नहीं मतलब क्या बोलूं मैं कुछ बोलने लायक है ही नहीं बचा ही नहीं कुछ मैं भड़का उठ गया भाई. Don't waste my time. यार mother. Fiji, what do you say? Go. Are you ready to stretch your wing? Right. Body and mind. Right. Get out of my way! अबे भाई इधर क्या कर रहा है भाई इधर से निकलो भाई. इसको पानी में डुबाओ क्या? इसको पानी में डुबाओ? इसको चलो पानी में डुबा के मारो. आने दे इसको पानी में डुबाता Go. इसको साथ डुबाऊंगा मैं.
उसको मैंने डुबा के मार दिया। What the fuck? पाला चिकन है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है ना, उसको मैंने डुबा के मार दिया। स्क्रीन पे देख। वो जियो वाला है। बहुत बड़ा वाला। हाँ जियो ग्लिचर। बच्चा बाप एंड ग्रैंड बाप। उसको मैंने डुबा के मार दिया। ग्रैंड बाप को तो नहीं, बाप को मारा तूने। ग्रैंड बाप कौन है? ग्रैंड बाप तो जियो विशाप जो। अरे वो नहीं भाई, कुछ और, किसी और को डुबा के मारा है मैंने। अरे नहीं, मैंने ग्रैंड बाप तो नहीं बोला, मैंने बोला तूने। I heard that Salterai हाँ, was मैंने the विशाप home नहीं of मारा है Salt's कोई भी। people. Therefore, there's sure to be loads of valuable relics nearby. According to legend, the people of the god of salt, Havria, enjoyed prosperous lives under her protection. But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things left here. Oh, good. That's just great. If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have come. About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the god of salt, which is actually how the area originally got its name of Salterai. However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to break the seal. I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the god of salt. I don't know. There's no concrete evidence. But I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long forgotten truth. का कोई वेरिएंट नहीं है ना, बट नहीं वो जियो विशाप के जैसा है। मैंने जियो विशाप हाँ तो भाई तो क्या तूने जियो विशाप ही बोला था भाई। तू बहुत बात बदलो इंसान है भाई। अरे नहीं, वहाँ पे तू बहुत बात बदलो इंसान है। ठीक है भाई, जियो विशाप का बोन मिलता है, इसलिए तो मैंने बोला है भाई। ठीक है भाई। The god of salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shame secrets to hide. So, the one who wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. This doesn't sound like something the Lord of Geo would do, though. Who cares about all that? It sounds like countless treasures of the god of salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? You weren't listening at all, were you? Even if there's a mountain of treasures inside, nobody can get in if the seal isn't broken. But we have the illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. A little seal shouldn't be any trouble for him. This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets. I may know something about it. What? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather disorderly, they do in fact contain the secret to breaking seals. Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Okay, since Mr. Zhongli says so, follow me then. I wanna rob a bank and spread the money through the street. Clip it, I'm calling the police. FBI, open up. I wanna rob a bank and spread the money through the street. I will swat Sanak right now. Sorry, हम लोग इंडिया में SWAT नहीं है तो रॉ को बुलाते हैं, रॉ इंटेलिजेंस। Let's go. But I wanna rob a bank and spread the money. Here it is. There's some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of salt. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. Wow, Freezy being collective about berries. That's kind of a rare thing to see. See that? Wow. Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's actually another mechanism that must be activated. Oh, Another? नहीं,
This सनक place का seems अटक गया था familiar. और सबका like चल रहा है. I mean, remember. फिजिकल I चल think रहा there's था. some elemental monuments Then here. like it's okay. So you're saying they're related to all this? अच्छा, are you ready? When I investigated the seal last time, I Kunta had icon someone with a follow. vision accompany me. What do you mean? Not the normal one. Okay. Oh, Normal spin one करेगा. first. Weapon banner. No, what? Wish. Not 10 করবার ছিল না. 6টা ছিল 6টা করতি না. আরে আমার পুরো প্রাইমোজেম আছে. Float not bad. Stringless একটা No. Bennett. Oh. Bennett. Nice. Okay, done. আমার জীবনের সব দুঃখ Okay, শেষ. you got Bennett on the second account. अभी होता उसमें. Let's go. अभी होता. Ready. Let's go. Let's go. Poggers होता. এবার যদি জ্যাগলিং পাই না. Skip. But when we lit up all the elemental monuments, nothing happened. That's because you don't just need to activate them at the same time, but in a certain order as well. Otherwise, the seal will not be broken. The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. All desolate and devoid of life. From Leo. Leo And you is have to vast, main Jiangling. What the hell are you yet doing? even one haven is hard to find. To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? I think I've heard this saying before. Jiangling, Certainly Bennett. you Not have. bad. And the contents of this saying are also related to the god of ভালো salt, DPS to লাগবে. provide a haven আমার for ভালো her DPS people, জিরো আছে. whose lives had been ravaged by the Archon War. This benevolent god Bidu searched basically- all across Liyue. मिला ना फ्रिज को At होता that हूँ मिला time, सस्ता वाला. with the chaotic fires of war engulfing the land, even one इसको sliver first of account peace में was a 5 luxury, constellation मिल गया. इसको and second that account में haven एक she constellation eventually already found मिल गया. is right here. Without doing Today, the spiral. it is known as Sao Yeah, Turai. spiral abyss क्या? How sad Second then. constellation. गेम And सुन this गेम peaceful कुछ place इसे was destroyed कोट by कोट Morax. बताना चाहता है. तू Jiangling use करेगा. Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Whatever happened doesn't matter as long as we can get inside that ruin. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. With this clue, you should be able to solve the puzzle. You said you are going to use Traveler. No, Traveler is your DPS. Let me lead the way from here. ভাবতে হবে. Yes, Traveler is your DPS. जियो ट्रैवलर. হ্যাঁ কিন্তু No. अभी But कैसे जियो you- होगा? आपका एनिमो है. সব ট্রাভেলার. এই তো আমার পার্টি হয়ে গেল বোঝায়. काया ठीक है. হেলথের জন্য লাগবে. নিজেকে লেভেল फक घोष रही है. मैं किसको देख रहा हूँ? लीसा यूज कर रहा है. Never have I ever. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. The directions are the South, clue. east, Give it west. another try. South, east, west, north. Okay, रुक. मेरे को south, east, west, north I करना है. think now Sanak is the only one who doesn't have a Bennett. আমার দুটো অ্যাকাউন্টে বেনেট হয়ে গেল সালা. Everybody has a Bennett. Rectco, you get a Bennett. Fizzico, दो अकाउंट में you get a Bennett. और जैंगलिंग भी मिला. पॉइंट टू नोट. इसका जैंगलिंग का कोरोना वायरस में बोल रहा हूँ.
इसको शांगली मिल जा रहा है। चलो कॉन्सुलेशन की हो गया होगा। अरे इजी कॉन्स्टलेशन 2 3 इजी कॉन्स्टलेशन 2 माय गॉड टाइमिंग मैन टाइमिंग Look! The seal really was broken! Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. It was not the game real. is telling you, it's giving you a Now, sign. it's time that people learn the hidden truth lost to time. अबे तूने अभी भी सीन में घुसा ही नहीं है क्या साइट का अभी भी साइट में घुसा ही नहीं है तूने नहीं अभी तक नहीं मैं पूरा स्टोरी सुन रहा हूँ मैं पूरा स्टोरी सुन रहा हूँ Before entering the ruin, I have a proposal that will help us prevent the kind of senseless arguing between you two that we saw at Guyonstone Forest. Okay. What is it? I propose you two agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim. Not before that. To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will just be between you all. Yeah, boy. Hey! Last warning, अभी जिप काट दूंगा मैं. I don't agree. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? No, absolutely not. I don't agree either. Why did you do that? He will only defile the precious relics left behind by the god of salt. I can't accept this. I never played Beru. If the contract is not agreed upon, I will no longer serve as your consultant on this expedition. Counter and stuff. You will have to rely on your own experience to find whatever treasures are hidden in this ruin, as well as let him attack you. You have the audacity to demand this. You will not receive any damage if you counter. Then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt should be enough to make a fortune. If you want me to agree upon this contract, so be it. I just have one request, Mr. Zhongli. If we discover the truth behind the God of Salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morex's image. I can accept this arrangement. Well then, let's go. ये क्या था जीप काटने का कमांड हमें नहीं मैं अंदर कूद गया इसने बैनर लेके हमें आके अभी नहीं बोलूंगा यहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी है अंदर कूद गया इधर पे कोड लैपिस देख रहा है मेरे को साथ ही साथ तू कोड लैपिस लेके क्या करेगा तेरा कौन सा कैरेक्टर पे लगता है I have a question. कौन सा कैरेक्टर में लगता है? Don't tell me it's Ningguang. जब लगेगा तब. तूने बोला था पहले कि Ningguang के लिए मशरूम लगता है. I was like what? पता नहीं यार मेरे को याद नहीं है कोई एक कैरेक्टर करने के लिए मेरे को लगा था मुझे इसलिए लग रहा था Ningguang के लिए. बारबर है. हाँ then बाद में बारबरा निकला. Give up. Useless. Boring. तेरा जीप फिर से काटना पड़ेगा लग रहा है. हिंदी. इस बार स्कॉर्पियन जीप काटेगा भाई. काट दिया. मैंने काटेगा बोला था भाई ज्यादा पर्सनल ले लिया इसने. क्या बुलशिट करे जा रहा है जल्दी लूट के जा ना इन लोगों से फाइट भी क्यों कर रहा है इनको सॉन्गली से खेलना है ये खेलना है तो जा अभी जल्दी क्या कर रहा है क्या कर रहा है सॉन्गली एक सेकंड अभी जा अबे स्नैपड्रैगन और रोटा सेट से कुछ नहीं होता फिर भी नहीं छोड़ूंगा एक भी मैंने बहुत गलत चीजें सिखाया था एपेक्स के टाइम से सब मुझे दिख रहा है अभी बहुत गलत अभी मुझे भी खराब लग रहा है
अरे ब्रू क्यों स्टार्ट मिलेगा कर। ये वाला? अरे क्योंकि ये स्टोरी मिशन है, स्टोरी डोमेन है। यस, मिशन भी नहीं। जोंगली यूज कर, बहुत अच्छा है। यहाँ पे जोंगली यूज करना पड़ेगा तुझे। जोंगली का आर्टिफैक्ट्स एंड उसका वेपन देख, ये क्या वाला है उसका जोंगली वेपन? का सी प्रेस करके देख सकता है, चेक कर सकता है तो। और ये तो जियो वाला वेपन है। 71 चेक लेवल क्यों है भाई ये? Osmanthus wine tastes the same as I remember. तू आर्टिफैक्ट एंड वेपन देख। अटैक वाला वेपन है। इंक्रीजेस आर्टिफैक्ट शील्ड देख। स्ट्रेंथ, ये तो सही है भाई, इसका तो शील्ड होता है। नोब्लेस नोब्लेस ऑब्लाइज ऑब्लाइज 16 लेवल है सारे। ये यस बॉय। किसी के औकात में नहीं है भाई इतना कॉन्स्टिलेशन। यस Stabilize. ये स्टोरी बोलेगा, ये बॉडी के पास जा। यस अभी जा, हो क्या, एक बार स्टोरी देख लिया ना। अबे कितना देख, एक बार ही देख। Are these statues? No. These are people. Duh. They were probably followers of the god of salt. भाई इसका क्या क्या वो है, क्या कॉम्बो है इसका? चलो पियर में लात मारता है, घूमते घूमते जाता है। अटैक होल्ड करना है, इसका अटैक होल्ड कर। अटैक होल्ड करो। ये देख। I think I will save for Zhongli. Zhongli is so freaking good. अभी you can't climb on this. You have to. अरे तेरा पिलर से तेरे को जंप करना पड़ेगा. You can't climb. Rise. क्या बढ़ा दिया उस पिलर को? अरे अरे अबे रुक, वेट वेट वेट। अरे होल्ड करके फाइनली। अरे ये भी चले। अब सेम पिलर अगेन। अगर मैंने ये यूज किया नहीं होगा। इसका अल्ट यूज किया तो हो जाएगा। अल्ट से हो जाएगा। क्यों करूं मैं? ओके, ये बोलने वाला है थोड़ा स्टोरी। बॉडी पे नहीं। Yes. Look at this. It's filled halfway with salt. You don't know the power of Zhongli. Just looks The like a fancy big salt dong holder. Zhongli. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to Hey, my boy, I knowledge, said it's big no dong ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever Doesn't half know what full. is the meaning of big dong That is Zhongli. to say, it is bottomless. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount I am inside 100% won't sure right change? now. He doesn't know Exactly. the meaning of big dong Able to Zhongli. produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I claim this is mine. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. I can sell it and make a fortune. Hey! How can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? If Mr. by the way, Clement wants ladki this is salt going to chalice, get disappointed then the next really object bad. we find will belong to Miss Wanyan, But you have to know according the to the story first, contract so. agreed upon. Of course, as we agreed. And I am But how pretty can sure you don't know anything the be meaning worth of more than disappointed. this rare find? Since we have a contract, it's no use for me to fight boy, with him. I'm on the clear. Then let's move go. on, shall we? ये कौन है? ये तो फ्रिजी है। नहीं, ये फ्रिजी नहीं है। फ्रिजी को मैं दिखाऊंगा। This is order. ये देख। Obliterated. Obliterated. Do you see that? Oh my god. Okay, यहाँ पे yes. See, easy. You don't even. You don't need to have the Baron Bunny. वो जो भी बोलता है. Just a simple ruler. It doesn't look to be worth anything. This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool.
Yes, for big dong मेरे को एक Zhongli. ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसका मैं अल्ट स्पैम कर सकूं. Indeed. But the god of salt इसका imbued it अगर with Zhongli का another एनर्जी power. रिचार्ज वाला देखे, नोब्लेस ऑब्लाइज पूरा एनर्जी रिचार्ज के ऊपर है. When you stick इसका this अल्टी ruler in the ground, बार-बार अगर the आएगा surrounding ना, area इसका will मीटियोर become गिराते covered in रहेगा. salt. Obliterated. Much like the deeper it is मैं stuck बोल in रहा the हूँ, मीटियोर ground, गिराते the more रहेगा. salt will appear. कुछ नहीं कर पाएगा It is कोई. essentially a मैं bumper ये वाला harvest स्टोरी of क्वेस्ट salt. करके अभी बंद करूंगा भाई. मेरे से नहीं होगा एक दिन That's मुझसे. even better than the salt chalice. मैंने एक दिन में 3 ठोकर Well कर then, दिया था, so according to our contract, the salt ruler goes to Miss मैंने तो Wanyan. ये No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? अभी Zhongli रेक्स लैपिस बन के इसको And this मार girl देगा. has been useless. Why would she get anything? his big dong Zhongli will kill him. Here we go again. And I'm pretty sure Sanak doesn't know the meaning of that. So you are saying you want to break the contract? But Freezy knows it. Do you know the meaning? So what if I break it? Now that I've seen how the Zhongli. mechanisms in this ruin work, Do I you no know the longer meaning of need big dong you. Zhongli? Let's not forget who hired who here. Why should I let Yeah. you make the rules? Because you agreed you to a know, contract. you know. Rex the meaning. Lapis once said, Yeah. ones who break Yeah, their yes. contracts shall suffer Yes. the wrath of the You rock. do know the meaning of big That is dong one of Zhongli. your Liyue gods. I am from Snezhnaya. I Will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. See. Correct. Oh, मैंने wrecked बोल दिया. ओ भाई इसका कितना जल्दी आता है अल्ट. वही तो मैं बोला, एनर्जी रिचार्ज वाला देन. और अगर मैंने जियाओ का ये मारा फिर इस पे सिलेक्ट किया तो अरे भाई मैं कर नहीं पाया सही से. किधर है ये? इधर आ, सुन. तो ये खा पहले. खाया तूने? अब इधर मेरे सामने. आजा. I will have order. क्या वो? What मर भी गया. I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the ruin. दिखाई दे रहा था. Leave this place. के पास. Oh, darn you! Just you wait. कुछ नहीं कर पाएगा तू. टाटक लिया उसका शुगर बेटा. Some archaeological sugar beta. survey. He could only pretend for so long. Wow, new word, sugar son. Good thing Paimon can smell a liar from Sugar a mile boy. away. Sugar Clement's boy, yes, wrongdoing sugar boy. stemmed from greed, yes. Sugar chutia. But besides greed, there are many But- other things that may tempt us ये to and break chutia, you are contracts. chutia. When people see the object of their dreams, how many are really No, able to you said control child their is chutia. desire and follow By the the way, child contract? has a child. I think we should अबे be ठीक है honest भाई. with each other now. Which is his brother. I said which is his brother. इसमें क्या That in गलत है? truth, not a single member of Spoil this कर दिया उसने अपने archaeological expedition came here for archaeology. Why do you say that? Miss, बहुत funny jokes you था lack वो even the mission most में. basic archaeological knowledge and can recognize Mr. naught but a few Cyclops, simple relics. However, you are an expert when it comes to anything guard, Mr. regarding the god of Cyclops. salt. You aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's भाई enough. Zhongli रीडर हुआ तो मैं Sir, Zhongli के लिए you are कर दूंगा indeed लग a रहा man है. of great knowledge and talents. I DLO seem कुछ to have नहीं है been इसके right to सामने. seek you out Zhongli once I can plucked up do my courage. everything. You're right. I'm DLO is not only a DPS. scholar of archaeology. Zhongli can be support, DPS, I sub come from one DPS, of the whatever 8 you want trades him under to. the jurisdiction of the Qixing, Yinyuan Hall Zhongli of the card salt spam industry. करूंगा मैं बैठ के. Our ancestors were those protected by the god of इस salt card all those सबको years रुकवा ago. देता है. And the मार भी Archon देता War है, engulfed the land in obliterate कर देता है chaos. पूरा meteor फेंकता है. जब पहले Zhongli आया था ना, he was actually kind of shit. Oh, But after they buffed right. Geo, Now that you and they are mention going to the buff Zhongli Geo mains we more. like. I very seldom Yes, use and the they are going to name buff Morax. Geo much more now. During the war,
Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. So Zhongli was We hate God him. Li. He's going But to this be is out Morax's of the world Liyue now. after all. And its history is written as he wishes. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. Naturally, of course. But I must add, Liyue is no longer Morax's Liyue. Come with me. All the answers you seek lie ahead. Sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy. अरे आराम से ओके ठीक है इतना भी ज्यादा नहीं करने को बोला था Zhongli school. स्कॉर्पियन अकाउंटে খেলবে স্মার্ট অ্যাকাউন্টে কেন ये होएगा লেভেল 15 হয়ে গেছে কয়েকটা স্টোরি মিশন বাকি ওটা করলাম Quake আমার ওকে নিজের অ্যাকাউন্টে খেলার নেই আমার নিজের অ্যাকাউন্টে খেলেই নি আজকে আমার খেলবার নেই আমার ডোমেন পড়া হয়ে গেছে রেসিন নেই আর কিছু পড়বারও নেই जा इच्छा कोनो है आप एक काम करना मेरा जियो प्लस कलेक्ट कर दो मैं वैसे बंद कर रहा हूँ Solidify! ठीक कलेक्ट करेगा ये काम क्यों देखते हो तुम लोग जियो हमारा जियो प्लस कलेक्ट कर दिया अभी देखिएगा क्या होगा oh ये चला This guy is big. Human reactions. He's built different. Oh my god. This is order. Oh, baby, Quake! Useless. You're in for a little shock. Crumble! Yes, I can. I'm also seeing this. Interesting. The team bomb আমি জীবনে Okay, now this is going to be a dramatic sequence. A little bit, yes. This is a sword? Aha! It's a broken sword. This is proof. This proves that the god of salt had to fight back. Fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. The power of this sword surely is much greater than that of the Salt Chalice and Salt Ruler. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. It does look like something left behind after being defeated in battle. 2 pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are 2 separate relics. According to the contract, you can only claim one. Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Yes, but the only one object per claim clause still holds true. You cannot take 2 relics at the same time. This logic! Zhongli, she seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. How about you let this one slide, huh? When there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is not followed, then it is broken. No! If I only take 1/2, then it can't be repaired, and the power of the god of salt cannot be restored. No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided? Then there is a price to pay for breaking the contract. Zhongli! That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. That's okay. The god of salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to that.
Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't hit her! Perhaps that punishment would be easier for her. But, as punishment, I will tell you the truth. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. I'm afraid to say that the god of salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the seven. What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Tevat. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. After making countless concessions, Havria lost all of her lands, until only one small haven remained. No. No! It can't be so. In her last days, she had not even a single blade to defend her people with. Not even a single blade? Then... this sword... This sword is not a relic belonging to the god of salt, but is instead the murder weapon used to kill her. Murder weapon? No! That's not true! That can't be true! You're trying to test my faith in the god of salt. As I said before, I only state the facts. Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! Hey! Hey! Come back! Indeed. Otherwise, why would I use the truth as punishment? I did not want to tell her such cruel facts. But the contract was broken. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth. स्कॉर्पियन हाँ बोल ये बंदी तो गॉड ऑफ सॉल्ट को कुछ ज्यादा ही मानते हैं Are these statue हाँ thingies? वही तो उसलिए तो बोला ना the punishment ये is the मिशन truth. के बाद हम कैरेक्टर कंपैरिजंस देखेंगे कंपैरिजंस कंपाई क्या बोलते हैं And betrayal. तूने ये कुछ नहीं देखा मैंने कुछ नहीं किया कट सीन से उसको हटाया तो बिल्कुल नहीं What did they see? What did they do? ठीक है What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. ये सिर्फ जोंगली खोल सकता है कैसे भाई He's got वो बात भी है जोंगली एक ऐसा गॉड है जो लोगों के बीच में रहता है yes because he was very aggressive and bad before but बाद में वो like he started living with the normal people and then he realized ये अच्छा हाँ and मैं अगर ये देख भाई लात मारता है ये लॉन्ग रेंज अटैक विद स्पीयर ये देख क्या है भाई और भी पावरफुल था बट ये लाइक इसका नॉर्मल है आई मीन मैं लोर के बारे में बोल रहा हूँ नॉट गेम Quake!
quake! This is the scene of the crime. इसको हटा ही दिया. Havria's body dissipated, leaving nothing but ट्रैवलर को these भी हटा दिया traces था, of only salt. पाइमोन था. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind, but weak god could never protect anyone in wartime. The Archon War was cruel in the extreme. Instead of consigning her to the agony of defeat, they thought perhaps it would be better to give her a quick release. But what about these statue thingies? No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Those who could not flee were thus transformed. ये क्यों लग रहा है जोंगली का अल्ट से ट्रांसफॉर्म हो गया? Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue, where they sought refuge with Rex Lapis. But God of War तो सबसे powerful होगा ना? Yes. Their descendants feared Havria's remnants and lived in Zhongli, the terror god of that she had contracts. laid upon them an eternal curse. He became god So of they contracts risked their after, lives to like, come yeah, here, he worked with the god of to dust. break the sword and offer up obeisances in क्योंकि, hopes like, that the her god of dust anger was might be Zhongli. appeased. चूतियागिरी मत कर, मेरे साथ काम कर. But they need not have done so. तू ब्राउन होगा, मैं For ब्रेन how होगा, could a हम दोनों god अच्छे बंदे who had होंगे. never once resisted, even till the end, nurse And hatred he was like, for okay, her people I'll in do her it. heart? I'll do that. I will not do चूतियागिरी anymore. Even if this is so, I can't. This must be a lie. A false history, all of it. Don't you dare try to shake my faith. क्यों ना? इन्हें तो पता ही नहीं है जोंगली है. Zhongli didn't show any mercy this time either. This is the price she must pay. Yet I would not call it a bad thing. Hey, what's up? Hey, Omako. Omenko, hello. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately, simply recognizing the truth is good enough for now. No, indeed. How sharp of you. Yet this is not a matter of wisdom, only age. Faith in a god who has already passed will do you no good. So it is for Havria. And so it is. All right then. Now, would you like to accompany me in taking a trip to Guyonstone Forest? Huh? What do you want to do, Zhongli? Don't mind me, I was not talking. Treading old ground, telling Frizzy? old stories. Just because you're One playing with cannot your own help but account, be you have reminded to of see old all your acquaintances. Geoculus stuff, okay? नहीं. Yes. ओ ये हो गया. ओ अभी भी नहीं हुआ. नहीं और भी बाकी है, थोड़ा बाकी. जोंगली का अल्ट भाई ओके. इसलिए तो मैं जोंगली करे जा रहा था भाई. जोंगली. अबे ये कहाँ गया? अरे वो सेम जगह जहाँ से हम लोग घुसे थे. अभी क्या हाइपोथेसिस फाइट करना पड़ेगा? नहीं हाइपोथेसिस नहीं फाइट करना पड़ेगा. कौन बोला हाइपोथेसिस फाइट करना पड़ेगा? ऊपर जाना है. जोंगली अगर जोंगली रीरन हुआ डीलक्स से पहले मैं जोंगली का अल्ट स्पैम करूंगा. अबे ऊपर जाना है. कहाँ से जा रहा है तू? हैक्स है मेरे पे. मैं अभी मैप खोलूंगा, टेलीपोर्ट हैक्स करूंगा. बूम. नाइस जोक मारा रे. जोक मारा. अबे रिप जाओ. फिर से. हाँ रिप जाओ. जाओ फोटो टाइम. ओ भाई डूटो जियो. It easy.
हमारा कंप्लीट हो गया सर। स्कॉर्पियन तेरा भी जीप काटना पड़ेगा। क्या अभी तू स्ट्रीम नहीं करेगा? कर मैन रहा हूँ एंड मैं ऑफ द स्टोरी आ रहा है। एंड ऑफ द स्टोरी है और मैंने बहुत कम बोला है, इसने ही बोला सबसे ज्यादा। मैंने कुछ नहीं बोला। use elemental reactions, they are very weak to elemental reactions, you bitch. Oh, wait, got it. See that? Do you see that? use भिंडी अल्ट। ये ट्रैवलर यूज कर रहा है, ये ट्रैवलर अल्ट यूज कर रहा है भाई। Are you serious? Why are you keeping traveler in your main account? Traveler main करूँ। अरे he's like Benton का cannonball, okay? They smash a lot. Pause. एक second. खाना खिला रे खाना खिला। क्यों नहीं? If death comes knocking at your door, call my name. It will come. Adiptus Xiao. I'll be right What? there. Call my name? Oh भाई, अगर ज़ियाओ ये बोलते हैं, it sounds so sexually bad. बोलता है, देख स्क्रीन शेयर देख। हाँ मैं स्क्रीन शेयर पे ही हूँ। I can listen to your sounds. If you awake to a knife at your throat, if monsters dig their claws into you, if death comes knocking at your door, call out my name. I did not sign up for this. I will be here when you call. Call out my name. Wow. আমার গেম ল্যাগ করছে এখানে শালা। Freezy. You got shitty characters now. I mean, you got good characters, but you got shitty art. Yes. Artifacts আমি and নিজে stuff. ভুলে গেছি সব। इतना लंबा क्यों है बे? अरे मार। क्योंकि वो तेरा बाप है, वो सबका बाप है, शुगर डैडी है वो। इसलिए तो मैं जोंगली के साथ फोटो शूटिंग कर रहा हूँ। तेरा ना प्रॉब्लम है मेंटली। Never mind. Oh wait, pause. There is another challenge. Pause jam. वाह फोटो शूट। ये niggas स्ट्रीम चल रहा है। bounty सेक्सुअल असॉल्ट के लिए तेरे को बैन कर देंगे। वो ये कौन सा वो है? अरे फोटो खींचिए। ये फोटो शूट करता, I don't know why। उसका कांड में घुसाना था क्या? Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Guyan stone forest. Then God will be like, The Adepti have presently handed Leo over to mortals. And Havria's time was even further in the past. The salt chalice and salt ruler that she left behind should not return to Leo. To leave them here is to let them slumber. And it is also a homecoming. I ended an era with my own two hands. likes role playing I've always wondered how I should in a bad way. remember that which I Not ended. the normal role History playing. records, but history may be changed. This incident proved that. अरे उड़ता जानवर। Time is a mighty force, and history's twist in its flow. I need to find a better way of recording history in order to engrave its truth. Stone carvings were one such ancient method, but unchanging stone, immovable earth, even one such as myself. Someday we may all disappear. Therefore, I thought of you, traveler. You are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. If our history is engraved in your memory, it will one day accompany you into another world. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times
and tides of Tevat. Zongli, more I didn't like take zombie. photos like that. Zongli, more like zombie. भाई मैं फोटो सबके लेता हूँ. Shorty, more like potty. Okay, he's getting very cringe. I don't like it. जीप काट रहा है इसका. I am fucking happy. ये middle of nowhere ऐसे Well, weird jokes may you बोलता है find ना. treasure among the सबसे stars, बड़ा cringe है even इस after दुनिया you have left Tevat. Now, ये I cringe am the शुरू god कर of देता है. wealth, so I would think that my words have some weight here. Now then, मेरा phone it is time that we consigned both the Salt Chalice and Salt Ruler to the sea. Zongli. Huh? Why do we need to throw them into the sea? As I said before, this is the place to which the remnants of many bygone gods are consigned. This includes Osiel, overlord of the Vortex, who the Jade Chamber most recently returned to this ocean prison. इसने बोला पाइमोन को घर में भेज. Thousands of years भाई ago, इसका प्रॉब्लम the है. Adepti and I fought against the Scorpion, मैं बोल turmoil रहा that plagued every हूँ. corner 100 of नंबर this डायल land. कर तू डायल. आज तू डायल कर भाई. किधर है cybernet.gov किधर I है? sealed many gods with my मैं शेरू spears. को लेके जा रहा हूँ guys, रुको थोड़ी देर. cybercrime.gov किधर है? उधर जाके इसका भी क्लिप Naught डालता but हूँ. folk tales remain. Osiel, you and I were foes, कौन चला भी गया? but our Quicksilver आया ancient चला grudge is गया. but a bygone memory now. It really matches the name. Quicksilver. May that which Havria has left behind Tell be me yours to guys, who is subsume. better, Quicksilver or the Flash? Can Yes, I youngling simp है. Can I? And thus another spark of divinity departs from Liyue. ये जंगलिंग simp क्या इसको My इतना legacy shall jangling, now be jangling, left to jangling those who come मिले ही जा after रहा है. to debate. And he's like, why? हो गया जिया. आची जोंगली स्कायो. मेरे कितना प्राइम जेम्स बहुत है भाई अभी तो. नहीं आता यो. आची दीदी स्कायो. The only keyboard toy, just jump, left click, key. Yes, that is the only thing. That is the only thing. কোনো ক্যারেক্টার হলো শালা. এটা শালা মানে লেফট ক্লিক সিমুলেটর খেলছি. नहीं कॉम्बोज भी होते हैं, तेरे को सीखना पड़ेगा. एक कॉम्बो होता है जिसमें तू जियाओ का बिना अल्ट के प्लंज अटैक कर सकता है डैश की मदद से. Body and mind. पता तो चुप रहे ना बहुत साइड का. Time to act. Ring cutter. Body and mind. जिंक्यू का कौन ट्रायल देता है भाई? क्योंकि वो बैनर पे. और जिंक्यू के साथ काया कौन यूज करने देता है भाई? जिंक्यू के साथ चोंक्यू चलता है. Body and mind. नहीं जिंक्यू के साथ काया क्यों चलता है पता है? काया का अल्ट भी चारों तरफ रहता है, जिंक्यू का अल्ट भी चारों तरफ रहता है, इसीलिए कॉम्बो है. हाँ सही बात है. Yes. I will still say Chonkyun is better for Jinkyu. No, my sword. They both are boyfriends. They are good combo. By the way, yes, I'm not joking about. They are a couple. Don't get frostbite. Let me weave you a berth. By the way, hangout event দেখলে next update. Yes. It gives you access to harem. Yes. No, my sword. Don't tell me, Sanak, you don't know the meaning of harem. नहीं पता. Harem, same thing. Actually. Sanak, तेरे को नहीं पता है harem का भी नहीं. No, he doesn't. Correct. You know, right? Obviously. এতগুলো harem anime দেখলাম সারা জীবনে. সবচেয়ে পপুলারটা আচ্ছা না No. সারা শেষ করবে পরে. আরে আচিন in this guyo.
Why does Chongyum loves ice cream? क्रेजी वैसे तू और क्रेजी कुछ आइसक्रीम वीडियो करते रहते हो ना? ओ भाई क्यों? अरे नहीं वो टूगल फन कप नहीं है, वो फ्रिजी और क्रेजी ने आज तक नहीं दिखाया हमें, पता नहीं क्यों। Submit for judgment. बर्थडे कब है? ओ इसका बर्थडे आने वाला है। सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट बोला जाता है। मैं तेरे को बर्थडे गिफ्ट दूंगा मैं। Submit for judgment. क्या देगा ये? मैं बता रहा हूँ क्या देगा ये देगा 10 पैसा। A touch of frost. मैंने रुपया बोलने जैसा था। नहीं तेरे को 10 पैसा बेटर लगता है ना, तो मैं रुपया नहीं दे रहा हूँ, मैं 10 पैसा ही दूंगा। Are you like that? Good one. Good one. Chin in this guy. देखो कैसे बता मैं क्योंकि मैं तेरे को माउस भिजवाऊंगा बोला था, तूने बोल दिया कब बर्थडे। I was like, no then you ain't getting this year. You ain't पिछले साल की बात है। Yes, you ain't getting the mouse. बर्थडे के 2 महीने बाद ये पूछ रहा है तेरा बर्थडे कब है? अरे मेरे को कैसे पता तेरा बर्थडे कब है? तब मतलब जोंगली इधर ही रहेगा क्या आपसे? I will remain here for a while. We did not, of course. I will remain here for a while, though the salt, if a day. I will remain here for a while. Not as it now, but if this. Alone, what the hell are you doing with him? गेम काटता है मादर बल्ब के बच्चे। Oh my God, और एक पिक्चर लिया भाई, कितना पिक्चर लेगा तू? निंगवांग के साथ पिक्चर ले लो। अब अभी पूरा चीची के साथ नहीं चीची के साथ पिक्चर ले, नहीं लीसा के साथ भी पिक्चर ले, सबके साथ। नहीं सिर्फ निंगवांग एंड जोंगली। You do know Ningguang pays for Zhongli's lunch? Ningguang knows Zhongli's Rex Lapis? No. She just pays for lunch. इसी बात तो अल्टर फॉर।